नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ फॉर ऑल के 38वें एपिसोड का मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। वे बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर मौत के मुंह से छीनकर अपने मरीजों को नया जीवन देते हैं। लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर भी एक इंसान है? हर तरह की चुनौतियां झेलते हुए वे हमारी सेवा करते हैं। एक फैमिली डॉक्टर तो पूरे परिवार की स्वास्थ्य कुंडली अपने पास रखता है। कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों ने अपनी और अपने परिवार की सेहत को जोखिम में डालकर मरीजों का उपचार किया। सभी जानते हैं कि देश भर में काफी संख्या में डॉक्टरों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं कि परसों यानी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। आज हम अपने शो को डॉक्टर्स को समर्पित करते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि समाज के लिए आपके हर प्रयासों में हील फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है। हम आपकी मदद से हम लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करते रहेंगे और आपके विचार मरीजों के प्रति जागरूकता की बातें मरीजों तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके माध्यम से हम इस देश को, इस समाज को एक स्वस्थ समाज का रूप दे सके। हमारा ये शो अगले 3 घंटे तक YouTube और Facebook पर लाइव रहेगा। तो शो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले देखते हैं ये राउंड अप वीडियो। नमस्कार। देश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली सहित नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्रों में बस मानसून आने ही वाला है। गर्मी से झुलसते लोगों को मानसून से राहत तो मिलती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। मानसून अपने साथ कई बीमारियों को भी लाता है। इस दौरान लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। पानी से होने वाले संक्रमण की वजह से वायरल फीवर की बाढ़ सी आ जाती है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी भी सिर उठाने लगती है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बारिश में कोरोना के मामले अनियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि अभी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे बरसाती रोगों से बचा जा सके। We start the 37th episode of Health for All with yoga. So today I am going to talk about yoga for monsoon. That means it's raining everywhere, and if it is not raining, it will start raining very soon. So how to take care of your health during
monsoon season because I don't know about other places, but Bangalore is anyways full of right now with viral, with cold and cough, with stomach upset. All these things are happening all over in Bangalore, and that's because it's already raining here. So how to take care of your health when it's raining outside? One very important thing you need to take care is your hydration. So what happens when summer is there, we automatically feel thirsty and we drink a lot of water, but that is not the case during winters and during the monsoon season. Okay, you don't feel so thirsty, so you end up drinking less water. So always remember, I have told this before also, 20 kg is equal to 1 liter of water. अगर आप 20 kg के हैं तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है. तो समझ लीजिए अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है. तो आप अपने वेट के हिसाब से पानी पीजिए हर रोज. ओके, वो पानी किस तरीके से पी सकते हैं? पानी आप प्लेन वाटर पी सकते हैं. अगर आपको चांसेस ज्यादा है कि आपका गला जल्दी खराब हो जाता है या नोज जल्दी आने लग जाता है, नोजी, तो अगर आप ऐसा करिए कि वो थोड़ा कुनकुना पानी पीजिए. दैट मीन्स नीदर इट्स बॉइलिंग हॉट नॉर इट इज कोल्ड. कुनकुना पानी. ओके, अ मीडियम हॉट water is something which you should consume throughout the day. And you can even have nariyal pani because again it's so try drink. And even if you want to drink juice or anything like that, make sure that you make it at home and not outside. Outside, don't try to eat lot of raw like juices or salads and all that. Please don't try to eat that outside because it may not be good for your stomach. As you know, monsoon is a breeding time for bacteria. So it's very important that you eat at home. दूसरे बहुत important चीज जो इंडियंस में होता है कि बारिश हो गई है तो पकोड़े खाना है, समोसे खाना है, ये तो माहौल बन रहा है. तो अगर आपको पकोड़े और समोसे खाना है तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट एट होम. बाहर नहीं. बाहर का खाना आपको जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें. तो अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव नॉस्ट्रिल को पहले देखें. एक्टिव नॉस्ट्रिल का मतलब क्या है कि एक नॉस्ट्रिल से आप हमेशा ज्यादा ब्रेथ ले पाएंगे कंपेयर टू द अदर नॉस्ट्रिल, और ये रोज चेंज होता रहता है. तो ये मत सोचिए कि आज अगर मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला है तो कल भी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही खुला होगा. तो आप पहले एक्टिव नॉस्ट्रिल देखें, फिर 2 फिंगर्स को इन बिटवीन द आईब्रोज रखें, 2 fingers closing your left nostril and thumb closing your right nostril. So now my left nostril is open and my left hand is in chin mudra. Okay, this is chin mudra. So it's gently, and don't press it very hard. It is very gently kept. Okay, so you breathe in from the active nostril and breathe out from that. Breathe in from same. Breathe out from other. तो अगर मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत की है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ही एंड होगा. दिस इज वन साइकिल ऑफ अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग और आलोम विलोम प्राणायाम. We now move on to our fortnightly episode called Technovision. How can large pharma companies do in digital transformation? And what are the technologies that would play a key role in this field? Today, I feel like from last 2-3 years, we've been debating on this matter. All pharma companies now should behave like a healthcare company. They should not be only producing pills, injections. They should start behaving as a comprehensive healthcare company. They should start looking into integrated disease management, where whatever disease area all pharma companies are working. For example,
for us, infectious disease is a key priority. In infectious disease, whatever it takes to manage the whole disease, whole patient journey, I think we wanted to get involved. This is one reason and one expectation we have with pharma industry now going forward. Like for us, we have moved forward in this space. What we have done is to manage infectious disease, not only private health, but also the public health. What we have done is we have started exploring areas like using AI for disease identification, using telemedicine and e-health for providing the best possible services at bottom of pyramid. And all this can be done in future, which we haven't explored yet, is by using wearable devices. Right now in private market, you, me, and a lot of people we have started using wearable devices. So this will become a key measurable point, maybe in future in public health. So this is one space where we have gone in depth and started working so that we can provide a lot of better solutions to the patients. What is the role of AI in pulmonary health, number one? And number two, you have been using AI in detecting issues in lungs. Can you explain your work? So first, what is the role of AI in pulmonary health? Sir, AI is the wonderful work in diagnosis of the pulmonary tuberculosis because of very few pulmonary specialists and radiologists in our district Baran, so that in any type of X-ray is doing at our district hospital regarding to MLC purpose, regarding to physician purpose, regarding to surgical purpose. When the X-ray is done at the our lab X-ray department, AI suspected this patient may be tubercular or not. Near about 4,000 X-ray done at our district hospital. Out of that, only 900 X-ray patient is follow for the sputum and CBNAT, and near about 40% found positive. So that due to deficiency of the pulmonary physicians and radiologists, this is the wonderful work in tribal belt, because we have no experienced person, no specialist person in field. And how early has AI detected, say, issues like lesions in the lungs or tuberculosis? Is it earlier? It is earlier, sir, because when a patient come to physician, pulmonary physician or chest physician in any problem regarding to TB, first of all, we doing the X-ray, then sputum examination. Next on, we also call for confirmation. So that takes about 4 to 5 days. That's why in the AI first day, we can detect or suspect that this patient is pulmonary tuberculosis or not. So there is the reducing the time 4 to 5 days to 1 to 2 days. We now move on to the next session. We are in the midst of the monsoon season. Of course, there has not been good news on this front, as the onset of monsoon has been sluggish across India, except probably in Assam, which is reeling under floods. This special session will be on onset of monsoon preparedness for holistic health. क्या बरसात के दिनों में आर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ जाती हैं? डेफिनेटली बरसात के टाइम पे आर्थराइटिस की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, और मैंने देखा है कि पेशेंट्स में भी सर्ज होता है. The swellings in the joints, they also increase, and sometimes because of the increase in the uric acid, because of the increased humidity and the patients not taking proper water intake and dehydration, and this gouty arthritis also sees a flare. So बरसात के आने पे जोड़ों में दर्दें जो है वो बढ़ जाती हैं, और उसका कारण या तो ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज वाटर मॉइस्चर होता है उसके कारण, और प्लस बिकॉज ऑफ बरसात के कारण जो नॉर्मल एक्सरसाइज पैटर्न होता है पेशेंट्स का, खाने में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं हो पाता तो उस कारण, और प्लस मेडिसिन अगर टाइम से नहीं ले रहे हैं तो उस कारण भी गठिया में बढ़ाव देखा गया.
You have been lecturing on Ayurveda abroad and other things and all, but one doubt that I have is how do you actually explain the digestive fire? Because, digestive fire is, if I would like to correlate with the enzymes, gastric acid, pancreatic juice and other things, that is different way. But I usually try to make people understand, and let's say to understand and feel it, how basically digestive fire works. It's very simple. I just have to tell them that, okay, do it, experience it, and then you'll understand what is basically the digestive fire. It is not, as you all understand very well that, everybody has a different kind of constitution, not Ayurveda, but in general also, mental constitution, physical constitution. The same way everyone has a digestive fire, simply. So it's very important. I'm not yet talking about the pulse diagnosis and other things. I'm just talking about the practical experience of knowing yourself. It's very important to know yourself, because this is very, very simple and very, very common that, if we 9 people are sitting together and having the same food, we may have a different kind of experience after having the food. Somebody would still be hungry, somebody would still be, somebody will be bloated, somebody will straight away rush to the loo and things like that. So the same way I explain people that, digestive fire is something which is basically, let's say, the capacity of your body, or let's say the tolerance of your body for any kind of external food, which you should experience, not like understand what I'm saying, just experience it. These lactose intolerance, gluten intolerance, and there are all kind of intolerances and all kind of allergies to certain food stuff. This is something which you can really experience. But I am very easily, I'm very happy to make you understand how it is happening and what is the solution for it. मॉनसून में वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं जी, और कोरोना के फीवर्स अभी इस समय चल रहे हैं, और दोनों के सिम्टम्स लगभग बराबर हैं. ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तो वायरल फीवर है और टेस्ट नहीं कराते हैं. जब डॉक्टरों के कहने पे टेस्ट कराते हैं तो वो कोविड निकलता है. दोनों में कैसे सिम्टम्स को देखते हुए कैसे अंतर करें? पहले ये हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है हम सब के लिए, क्योंकि कोरोना और जो वायरल फ्लू या नॉर्मल फ्लू, सीजनल फ्लू जिसको हम कहते हैं, उसके सिम्टम्स लगभग कई तरह से सेम होते हैं, बिकॉज इट इज अ वायरल फीवर, सो इज कोरोना. तो कोरोना भी एक वायरल फीवर होने के कारण सिम्टम्स ओवरलैप जो है वो दोनों के ही होते हैं. लेकिन हमने जो एक ट्रेंड देखा है अभी, जो पिछले 2-2.5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, जब कोरोना की केसेस में सर्ज होता है तो वायरल फ्लू जो है वो एक तरह से हम इतना कॉमनली नहीं देखते हैं जितना कोरोना को देखा जाता है. उसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, खासकर अभी गर्मियों के महीनों में जब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लोग इंडोर्स रहना पसंद करते हैं गर्मी के कारण, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो है उसका बढ़ जाता है. तो इसके सिम्टम्स में ज्यादातर हम जो कॉमन चीजें हैं वो यही देखते हैं कि शुरुआत या तो सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम से हो सकती है. थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर जो है वो आ सकता है दोनों केसेस में, जो कि सीजनल फ्लू में भी हो सकता है और कोविड में भी हो सकता है. लेकिन कोविड जो है सर, वो एक फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अनदर फैमिली मेंबर, जिसका ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द सीजनल फ्लू. ऑल्सो कोई जो भी हम वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जो कि खासकर हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनको क्रोनिक बीमारियां है, डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, वो सभी जो है वो कोरोना के लिए थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं. उनमें जो कोरोना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है. इसलिए इन सब केसेस में हमको इररिस्पेक्टिव की सिम्टम्स जो भी है, चाहे वो मामूली खांसी है या खराश है गले में या फिर माइल्ड फीवर है 99-100 तक है, तब जब कोरोना के केसेस हर जगह, हर प्रदेश में अभी बढ़ रहे हैं, हम सबको एज प्रिकॉशनरी कोविड टेस्ट सबके लिए ही करना चाहिए. एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिससे मैं ये मैसेज दे सकती हूँ सब लोगों को कि आप कोई भी फीवर को जस्ट सीजनल फ्लू अपने आप डिक्लेयर ना करते हुए कोविड का टेस्ट जरूर करें. इट इज सेड दैट climate change reduces the nutrient content of foods like rice, wheat, corn, and soy. Very, very important in these days because we talk about climate change. These nutrient losses have a large effect on the health of children. So what do you have to say about it? The food that we eat, or the food that our parents ate or our grandparents ate, and eventually what our children will be eating is very different. We may be eating the same crops, but the nutritional content is far more depleted as the generations go by. There are many reasons for the nutritional depletion. One is the soil itself is depleted.
The agriculture has ribbed the soil of its nutrients. Our foods are genetically modified and hybridized. The type of wheat and rice we're eating now is a genetically modified version of the original grain. So is the rice also. Also, these are hybrid plants. These are plants that have been engineered for, maximum amount of output in terms of the grain that has to be extracted from them. So obviously, there is a huge amount of depletion of nutrients, and especially things called micronutrients in crops over generations. So from what our forefathers had to what our children will have, probably it'll be not even half of the nutritional value of what they could consume. So therefore, also our food is industrially more processed, which means that it's going through milling and refining and polishing far more than it was done before. So all of it is ripping our food of nutrients, and that is one reason why so many of us have mineral vitamin deficiencies. In fact, if I just look at water, Shankarji, the water that we are drinking as against natural water, even our water is depleted. The reverse osmosis that we use in our homes is a disruptive technology. It removes the minerals from the water that we should otherwise have. So that is why everybody is low on folic acid and vitamin B and zinc and magnesium, and we need to sort of supplement them through micronutrients. But for children, I think one of the things that can be done is that as children are growing up, instead of only giving them wheat and rice and starchy vegetables, if we could add more nuts and seeds, more seasonal fruits, more millets like ragi, jawar, all that in their diet, then we can to a certain extent replenish these deficiencies. We can correct them to some extent. So I think one of the things that people have realized is that they can't be eating wheat and rice all the time. They have to eat much healthier grains and cereals and millets. They've also realized they can't be eating polished dals and polished grains. So they have to eat the whole lentils and beans. And they have to eat, pomegranate, for example. Shankarji is supposed to be one of the most ancient fruits. It has a very old, it was, I believe, in India, it was discovered many thousands of years back. And pomegranate, fruits like those, like berries, pomegranate, things that have not so commercially popular are far more nutrition dense. So I think more millets, more nuts and seeds, more fruits, seasonal fruits, more local vegetables can somehow close that gap which we are experiencing because of our main crops getting depleted of nutrition, which, as you correctly pointed out, is wheat, rice, corn and soy, which is largely what we eat, as our staples.
Hello and namaskar. Welcome to the 38th episode for Health4All, which is live on Facebook and YouTube. We start this session of Health4All with yoga, and we have with us Ms. Meher Munjal, a certified yoga teacher who has been practicing diverse types of yoga, such as Hatha, Ashtanga, and Vinyasa, and Insight Flow for over 10 years now. She also focuses on different styles of meditation and has been spreading the goodness of the ancient sciences via Yoga Connect. The topic for this session is yoga amidst monsoon. Welcome, Meher. How are you? Long time that we are not seeing you here on the show. Hello, hi, good morning, namaste. Namaste. I got married in the meantime. Oh, congratulations. Congratulations. Thank you. I hope your husband is also a fan of yoga. No, he's actually not very frequent in yoga, and I'll just say opposites attract. But now he's really loving the practice, and he's seeing a difference within himself. So I'm glad to make a difference in his life as well. I'm sure it would influence him, just like you influenced all our viewers also. And by the way, how are your pets also? They're all fine? All good. They'll be here soon joining us. So we'll get to Okay, you can start the session. It is there up to 8:55 so that we can ask a couple of questions. Over to you, Meher. Okay. Thank you so much. So this topic, yoga in monsoon. Now, obviously, yoga benefits us all around all seasons. It's not that only in the summer or in the winter, but of course, due to the seasons, like different seasons, there are different benefits that yoga has and different effects that it has in the body and mind. So for the monsoon that we know, there are a lot of different infections and different ways that this weather affects our body and health. And the one reason is that it affects our skin, right? When there is rain and humidity, it affects our skin in more, like many people get breakouts and they get different spottings. And there's a lot of skin problems that occur that I noticed personally. Also amongst my students, that they have a lot of skin problems, especially in the monsoon. Along with, of course, you have your mild flus and all of that we just saw the video, that how to differentiate the flu from COVID. And of course, the symptoms are pretty similar, but how do we differentiate that? So for the skin, I would say that you should definitely do a lot of pranayama, a lot of breathing, right? And I've spoken about that in my previous episode with, Gayatri. And today we'll be doing a couple of pranayama techniques, that how we can cleanse our nadis, how we can cleanse our lungs, how we can detoxify ourselves, how we can, fill our lungs with precious and good air and pump up all the, unneeded, unnecessary pollution and all of that from our body. So we will be doing the pranayama techniques. And then there are a couple of yoga asanas that are specifically there to practice during the monsoon season. So there are a couple of asanas that we do to increase our immunity, because what happens during the monsoon, हमारा immunity कम हो जाता है, ठीक है? Because weather change हो रहा है and बहुत सारे infections आ रहे हैं, and there are a lot of mosquitoes, there's a lot of pollution, everything mixing in the air. So we are actually breathing a lot of toxins as well without really knowing. So our immunity needs to be, you need to do things to increase our immunity and take care of your health, right? So we'll be doing that. And then, of course, at the end, we'll be giving gratitude to Lord Indra. So now, if the people don't know, Lord Indra is the Lord specifically that we chant for rain. So we will be giving gratitude. We will be doing Om chanting as well to give gratitude to Lord Indra for providing this the amazing rain. Now, rain is considered, of course, in the Vedanta and in the yoga studies, rain is always considered a time of joy and happiness. And rain is considered as blessings of God, right?
So we are very fortunate. I personally, for me, monsoon is my favorite season, and I'm very grateful. So we all should have gratitude for this rain to, cool down our surroundings and bring positivity and blessings to each one of us, right? So we will be doing that as well. Yes. So let us start. And of course, we know the benefits of yoga, but let me just little bit remind everybody else what are the benefits of yoga. Of course, it helps us to sleep better. There is so much stress, so it helps to reduce stress. All the day-to-day stresses that we take, small instances that we go through, yoga helps to calm us down and get in touch with our real self so that we are able to take our daily decisions better. And of course, it balances us, our body, mind, and soul. It aligns us. Yes. And of course, there are endless benefits of yoga. Keeps you healthy, wealthy, as we saw, health is wealth. So that is how yoga balances us, right? So let's get into it now. So first we will do one chant and then we will do the pranayama. Okay? So we'll sit with your legs crossed. If you can sit in Padmasana, that is your one foot on your opposite thigh, both your hands, your finger and your thumb into Chin Mudra on your knees and roll your shoulders. So you're sitting nice and tall with your spine straight. Your eyes are closed. Take a deep breath through your nose. Inhale and exhale. One more deep breath. Really inhale and exhale. And we will do one chant, Om chanting. So inhale and exhale, Om. Om. Om Trayambekam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mirtyo Mukti Ana Amrita. And slowly rub the palms together and take to your eyes. And slowly open the eyes into your palms and do your face and rest of the body. And we'll take a deep breath here again. And we will do the first pranayama to increase our immunity and cleanse all the toxins from our lungs and help to oxygenize our own body and lungs. So that is called the Kapalbhati. So what we are going to do is pump up all the toxins and let the oxygen purify our lungs. All right. So you will inhale through your nose and slowly exhale through your nose only. So keeping your mouth completely closed. So you can take your right hand and put on your stomach to feel the movement. So you will inhale nose, exhale nose only. Now when you're going to exhale through your nose, आप धीरे exhale करेंगे nose से. जब आप exhale करेंगे आपका stomach full अंदर की तरफ होएगा. तो जैसे example, inhale and exhale slowly. तो जैसे आप एक्सेल करेंगे नोज से ऑटोमेटिकली आपका स्टमक भी अंदर की तरफ पंप होएगा. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली करेंगे. सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन योर एक्सहेलेशन, नथिंग एल्स. ओके, so inhale through your nose and start exhaling.
Exhale and relax. So now you will do it with your hand, both your hands into the chin mudra on your knees, and you will do this little bit faster. So let us close your eyes, focus, and do this pranayama to increase the immunity. Kapalbhati. Inhale nose and start exhaling. Faster. Exhale. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale and exhale. And inhale. And slowly take your chin to your chest and hold your breath. Relax, exhale. Inhale deeply. Exhale completely. लंबी लंबी सांसें लेंगे. Inhale through your nose. Expand your stomach and chest and exhale through your nose only. Again, inhale and exhale. और दोबारा से साथ में कपालभाति करेंगे. पहले स्लो, उसके बाद फास्ट. तो आंखें बंद करके करेंगे, फोकस करेंगे. इनहेल नोज, स्टार्ट एक्सहेलिंग. Faster. Exhale. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale deeply.
And exhale again. Take your chin to your chest. Hold your breath. Slowly with focus, hold the breath here. Relax, exhale. Inhale and exhale. And slowly take your palms and put on your eyes. And slowly open the eyes into your palms and your face and rest of the body. So this was the Kapal Bhati. So you notice how slow se fast gaye. So we cannot directly start with the fast Kapal Bhati. Like a lot of people I have seen in the videos and just some teachers it is teaching the Kapal Bhati very fast. So that is a myth. So please इसको tempo में लेंगे तो पहले slow करेंगे. You'll get your lungs moving slowly first, getting used to taking the pumping your lungs with the oxygen, and then slowly when that your lungs get used to the pumping, then you will increase to going fast. So slow से fast करेंगे. And Kapalbhati is excellent because it increases your lung capacity. Okay. So when your lung capacity is increased, your immunity is directly increased. So, sorry, 1 second. Now you will see Leo Lyra is coming here. Okay. So yes, sorry, Leo Lyra will be joining us. My pets will be joining us slow. So yeah. So कैसे slowly हम करेंगे उसके बाद fast करेंगे. So when you're increasing fast, so what is happening? From slow to fast, you're increasing your lung capacity. When your lung capacity is increased, your life capacity is increased. So the slower breath, and also when you're breathing slowly, like from the starting, we're inhaling and exhaling slowly, and we're inhaling and exhaling through your nose. So when you're inhaling and exhaling through your nose, what is happening? You're increasing your breath capacity. When you're increasing your breath capacity, automatically your lifespan is increased as well. So for a longer, healthier life, you need to breathe, take some time and breathe the right manner, correctly. Okay. And this pranayama Kapalbhati, very, very important to increase your lifespan and increase your immunity. Okay. तो अब इसके बाद हम जाएंगे अनुलोम विलोम पे, दूसरे प्राणायाम पे, which is to cleanse your nasal passages. ठीक है, so your right and left nasal passages को cleanse करेंगे, and also to balance your frontal lobes. ठीक है, तो right and left जो आपका frontal brain का lobes होते हैं, we balance it. So your right and left is your sun, is your right lobe, and left is your moon. So sun and moon makes your universe of your body. So through the Anulom Vilom, we are balancing our own universe, मतलब our own self. हम अपने लिए universe है, ठीक है, right? We are our own universe. So we need to balance that. So sun, moon, Anulom Vilom, balancing. And also Hatha. So sun and moon is Ha is sun, Tha is moon. So when we are doing this pranayama, Hatha कर रहे हैं, हम अपने sun and moon को balance कर रहे हैं. ठीक है, तो हठ योगा जिसको कहते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हठ. तो हम अपने प्राणायाम के थ्रू अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, कभी कभी हमारे राइट साइड ऑफ माइंड ज्यादा चलता है, लेफ्ट कम चलता है. जैसे क्रिएटिविटी ज्यादा चलती है, कभी कभी प्रैक्टिकल साइड ज्यादा चलती है, कभी इंटेलेक्चुअल साइड ज्यादा चलती है. तो डिफरेंट साइड्स ऑफ ब्रेन में डिफरेंट क्वालिटीज होती है. वो ज्यादा इलेबोरेट में नहीं जाऊंगे, बट उसको हम बैलेंस करते हैं. ठीक है, ओके. तो आप अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? पहले अपनी बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, एंड देन यू टेक योर राइट हैंड, you will fold your first 2 fingers of your right hand. So this is called your Vishnu mudra. So Lord Vishnu used to sit like this, and this is for preservation of energy. So Lord Vishnu is the preserver, as we all know. He is the preserver of the world, of the universe. So we are also preserving our own energy through this mudra. Okay? So you take your right thumb and lock your right nostril. You will inhale through your left nostril. So let's do it together. Welcoming Lyra as well. So inhale left
With your other two fingers, slowly hold your left as well. So both your nostrils are blocked now. Slowly leave your right nostril. So leave your thumb and exhale. Again, inhale right, block, hold. Exhale left. Inhale left. Block, hold. Exhale right. So now let's do it with focus. Close your eyes and let's do it together. Inhale right. Hold your breath. Exhale left. Inhale left. Block, hold. Exhale right. Inhale right. Block, hold. Exhale left. Inhale left. Block, hold. Exhale right. Inhale right. Block, hold. Exhale left. Inhale left. Block, hold. Exhale right. Inhale right. Block, hold. Exhale left. Last two times. Inhale left. Block, hold. Exhale right. Inhale. Block, hold. Exhale left. Relax your hand again, taking two long deep breaths to your nose. Inhale. Expand stomach and lungs. Exhale, relax. Inhale. And exhale slowly. Slowly rub the palms together, creating heat between your palms. Take your palms to your eyes and open the eye in the palm and take the palm to your face and rest of the body. So this was the Anulom Vilom. Now, remember that when we are doing the Anulom Vilom, the time to block the nostril is up to you. So this was the minimum one I'm doing because we all are doing together. So as we progress into the yoga, so this holding, जितना आप hold करोगे उतना आप time increase कर सकते हो. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने 3 seconds करा या 2 seconds करा, this can go up to 30 seconds, 40 seconds, 60 seconds, like that, 80 seconds also. ठीक है, तो जैसे inhale, block,
तो ये जो ब्लॉक है इसको हम होल्ड जितना करेंगे उतना हमारे प्राणायामा के लिए फायदा है, अपने बॉडी और माइंड के लिए फायदा है. So remember, blocking and holding your breath with control is going to do a lot of benefit to you. It's going to be, when you are able to control your breath, you are able to control everything. Okay? So that is the start, when you're able to control your body as well, when you're able to control all the unnecessary ailments and all of that. When you're able to control your body, you're able to control your mind. So all the unnecessary thoughts that we have, how we control it and filter the positive thoughts and letting go of the negative thoughts. So all of this is through the breath. So this one also, Anilom Vilom, very, very important. Okay? So please practice religiously. Okay. So now slowly let's just move our legs. Okay. So dhire dhire you just move your legs out and just shake them like this little bit. So open your toes, open your fingers, even your finger, you just move, shake, 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 shake. So whenever we are sitting in Padmasana or Sukhasana with our legs crossed or one leg over the other, then we get a little bit cramped up. Okay? जैसे कहते हैं, the blood circulation is a little bit stopped. So always take your legs, hands, keep shaking in the middle when you're doing the pranayama as well. Okay? To increase blood circulation throughout the body. Perfect. तो अब हम आसना से जाएंगे. ठीक है. तो पहला आसना है हमारा पश्चिमोत्ताना आसना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड. ठीक है. तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हम बिल्कुल अपने लेग स्ट्रेट इस तरह से बैठेंगे. तो वी आर गोइंग टू सिट ऑन योर सिट बोन्स. तो मतलब अपने जो हिप्स है उनको थोड़ा हटा देंगे और जो सिट बोन्स है विच इज लोकेटेड अंडर योर हिप, करेक्टली उसी सिट बोन्स पे बैठेंगे टू हैव अ करेक्ट स्ट्रेट पोस्चर. ठीक है. योर बैक इज स्ट्रेट, बोथ योर टोज आर फेसिंग टू योर फेस. ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे कोई, ऐसे नहीं बैठेगा कोई. बिल्कुल अपने लेग्स को एंगेज करेंगे, स्ट्रेट करेंगे. ठीक है. एंड देन स्लोली टेक बोथ योर हैंड्स एंड स्ट्रेच योर आर्म्स, मूव योर बैक, मूव योर बैक, मूव योर बैक, मूव योर बैक एंड stretch it upward and stretch your arms. And then inhale, exhale. Remember to keep breathing through all your asanas, please. So inhale, exhale through your nose. And exhale slowly, नीचे 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 नीचे, जितना नीचे जा सकते we will go. Obviously, I am a yoga teacher. I can go all the way forward and maybe forward. But as much as you can go, you please go. Don't try to over exceed your limit, because if you do that, then what will happen? Supposing we are not used to going forward bending, so your knees will bend like this. So this we don't want. Knee has to be straight, leg has to be straight and engaged. So अगर आप यहाँ तक भी जा रहे हैं, that's perfect, that's okay. ठीक है. So inhale, exhale and slowly थोड़ा नीचे जाएंगे and head down and stretch both your hands forward. And यहाँ पे head down, close to your thigh. यहाँ पर 5 breaths लेंगे. Inhale, exhale. So through your nose, 1, 2, 3, 4, 5, and slowly walk back on your legs and slowly coming back and relax. Inhale and exhale. Again, take a long and deep breath and relax. Okay, so this was the Paschimottanasana asana, seated forward bend. And in this, your legs are engaged, your back is engaged, your arms are engaged, your breath is engaged. And this also increases your body capacity, your lung capacity, and excellent for your entire body stretch. So this is a very easy posture to work your entire body fast and effectively, right? Now we will move on to the second posture and the last posture, okay? So that is your Naukasana. So both your feet straight. So maybe not everybody is able to do this. So if you're not able to do this, you take your back support. तो ऐसे बैठ सकते हैं next to the wall. ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें क्या होएगा, you'll take your one leg up इस तरह से और दूसरा leg भी ऊपर की तरफ
तो बोथ योर नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे. जो बैक सपोर्ट है वो आप ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बट जितना सपोर्ट, मिनिमल सपोर्ट लेना है उतना लेंगे. टेकिंग बोथ योर लेग्स straight. Inhale, exhale here. Again, 5 breaths. Looking up, back also lifted up. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5. And very slowly come back and relax. So again, Naukasana is excellent for your stomach, right? Instant stomach reduction, Naukasana, both pose. Your legs are also stretched in hands upward. Your balance is also there. So this is all in one to keep your balance with your breath, body, and also keeping your stomach. This is for the stomach mainly, this asana, right? All right. So since we are running out of time, as usual, I am always very excited to share more and more information, so I lose track of time. So sorry about this. Okay, but I love you all and I would like to share as much as I can, so I keep going on and on. But okay, so we will just end the session now. So like I said, we will do the gratitude to Lord Indra. So sab saath mein karenge, hands together, folding, keeping again, sitting with your legs crossed and back straight. I will do the chant Om Shanti and one gratitude mantra. Okay, so close the eyes and let's do all of us together also watching. Yeah, so inhale, exhale. Om Purnamida. साथ में बोलेंगे पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Shukrana and gratitude for the rain, gratitude for the season, gratitude for each one of us, and gratitude for our own life. Slowly rub the palms. Take to your eyes, open the eyes in the palm, and to your face and body. And thank you so much. Om Namah Shivaya. Jai Guru. Thank you, Meher. That's a wonderful session. And I was just curious, the first mantra that you said at the beginning, was it for Lord Shiva, and last was for Indra? Yes. So last was gratitude mantra and peace and harmony for everything. And the first one was Om Triambakam, that is the Mahamrityunjaya mantra. So that is again a very auspicious mantra to start anything and to focus. So whenever we need to start our day or focus on something, so we do this mantra 3 times. So obviously, because I have time crunch here, otherwise you say this mantra 3 times. I only said once, but you say it 3 times. Mahamrityunjaya. Yeah. This Kabal Bharati and the Anilom Vilom can be done at any point of time in the day, or it's only in the morning? So you can do it at any time of the day, but the meals, so there should be interval of meals like 2 hours or 1.5 hours. So after you eat your meal, 1.5 hours के बाद आप ये practice कर सकते हैं. Yeah, Kishore, your turn to question. मेहर जी, लास्ट एपिसोड में एक डॉक्टर ने हमें बताया था कि मॉनसून में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और जॉइंट स्वेलिंग बहुत बढ़ जाता है. तो ऐसे में पेशेंट को प्रिकॉशनरी किस तरह का आसन करना चाहिए जो उनके लिए आसान भी हो और जो रेमेडी भी हो? तो ये जो मैंने पहले दिखाया था पश्चिमोत्ताना आसन, जिसमें आपने लेग स्ट्रेट और फुल फॉरवर्ड थे, दिस इज वेरी गुड बिकॉज ये पूरी बॉडी को एंगेज करता है और बहुत इजी है. आप इसको कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं. आप बेड पे भी, अगर आप जैसे उठे हैं तो बेड पे भी ये आसन आप कर सकते हैं. ठीक है, आप कुछ तो दिस इज गुड बिकॉज इट्स स्ट्रेचिंग योर लेग्स एंड इंक्रीजिंग ऑल द ब्लड सर्कुलेशन. जॉइंट पेन और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है, क्रैम्प हो जाता है, राइट? और उससे
तो हमें अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव और मूव करना चाहिए. अब इतना नहीं कि इतने एडवांस पोस्चर्स जो लोग योगा नहीं प्रैक्टिस कर सकते, वो ऐसे ऐसे इजी, जैसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड, अब ये सेम हम खड़े होके भी जैसे नीचे ट्राई टू टच योर टोज, तो ऐसे ऐसे इजी आसन हम कर सकते हैं, सो दैट विल प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस पेन एंड एवरीथिंग. थैंक यू. Thank you, Mary. That is wonderful. And I think. Thank you. By the way, when did you get married? Is it a long time back or just recently? Just recently. It was actually really fast. You know, when, as you say, like when things are happening, this is also like part of yoga, right? When things are happening, you don't know. It happened so fast for me. Like I had no idea that what was happening. Like I just got married like on the 18th of June. Yeah. Oh, that's pretty recent. Yeah. We were all expecting an invitation from you, but since it was very fast, I think you did skip us on the way. But that's okay. There's no problem. We wish you a very, very happy married life and continuing with your yoga also. And I'm sure you will be able to bring your husband to your line and start practicing yoga together. Thank you very much. For sure. And you will definitely be invited. This was a very small and fast wedding, so I did not invite her, but you will all be there. Online, I will do Zoom session. I will tell Chavi. Yes. You should. Let's enjoy that session. Yeah, this is not yoga, but marriage session. Thank you very much. Yes. Thank you. Thank you. We now have the session intro video, which will be played by the admin. Welcome back. Health4All is live on Facebook and YouTube as usual. Now, the next session is another important session after the yoga one, and this is on tribal health, livelihood, and women empowerment. And we have with us Ms. Smriti Das, who is currently working as monitoring and evaluation expert, Center for Youth and Social Development, Odisha. She'll be joining us in a while. And Dr. Raman Nair is a renowned epidemiologist working as project lead European Union project with CYSD in Bhubaneswar. Incidentally, both the speakers are from Odisha. Now, for the first round of questions,
I will invite my co-moderator, Kishore Malviya. थैंक यू सर. डॉक्टर रमन नायर, मेरा पहला सवाल आपसे है. वेलकम डॉक्टर साहब. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू सो मच. मेरा पहला सवाल आपसे है डॉक्टर साहब. हाँ, ये ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे देश में नेचर के बिल्कुल करीब रहते हैं. हम लोग की तरह पोल्यूशन में नहीं रहते, पोल्यूशन से दूर, नेचर के करीब ऑर्गेनिक फूड खाते हैं. फिर भी सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज इनको क्यों होता है? Okay, that's a very thank you for the question. So the thing is, they have, मतलब जब उन लोगों का if they have been diagnosed with any sort of a disease हो या some sort of condition, communicable diseases हो या non-communicable diseases हो, जो भी उन लोगों को diagnose होते हैं, they never believed in modern healthcare. वो लोग traditional healthcare को बहुत believe करते. So because of which they have been तो living condition के ऊपर भी depend करता है. I mean, there are a lot of conditions that are put into one. So it's like traditional healthcare की वजह से वो लोग बहुत especially if you see things like tuberculosis. Tuberculosis is one of the most rampant communicable diseases that you will find in tribal health, in tribal areas, especially like Koraput where I'm living. There you have tuberculosis is rampant because of a few reasons like वो लोग अपने they don't have access to healthcare. उन लोगों का मतलब main है कि infrastructure lacking है उसमें, and they do not have access to healthcare. They do not have access to proper healthcare, that is. तो वो लोग मतलब इसका मतलब नहीं है कि वो लोग natural ये जीते हैं तो but when you see that diseases are rampant today, वो लोग से we do not get anything. Just excuse me. Actually, there's some problem with the link that was sent to Miss Smriti Das. I think she's not able to join. Just give me a sec. Yeah. I'm trying. Just give me a sec. Yeah. Well, is there any problem? Yeah, actually, this colleague of mine, Smriti Das, she's not able to join because there's something wrong with the link. Now I'll ask the admin to send the link again. You can continue, no problem. Yeah. Chavi, please look into it. Yeah, so I was saying that since tuberculosis is one of the rampant communicable diseases you'll see there, even though they live in a very natural environment, but a disease will always stay a disease, isn't it? A communicable disease will always stay a communicable disease. So even though these conditions are very rampant there, they do not have proper access to healthcare, which, like I mentioned before, and उन लोगों को traditional healthcare बहुत वो लोग use करते हैं अभी भी. But I think since traditional healthcare is not going to help in any way, because when you see pandemics around, when you see such severe conditions around, traditional healthcare is, cannot be, somehow it just doesn't work. So I think which is one of the major reasons why, वो लोग इतना भी they natural resources के साथ use करने से भी they have a lot of these because they're unaware. First thing, unaware. उन लोगों को कोई मतलब awareness भी नहीं है कि ऐसा communicable disease होता है करके. I think that's one of my, if you ask me. हाँ. आपने अभी बताया कि they have no access to healthcare. Healthcare, yes. और traditional healthcare ही उनके लिए, और traditional healthcare भी उनके लिए झाड़ फूक, मंत्र, क्वेक्स, यही सब ज्यादा है. हाँ. अब इसका फायदा क्वेक्स उठाते हैं. तो एक डॉक्टर्स कम्युनिटी को क्या करना चाहिए इसके लिए कि उन तक ये हेल्थ केयर जो ट्रेडिशनल नहीं, जो आज का मॉडर्न हेल्थ केयर है, वो उन तक पहुंच सके? इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना किशोर जी, जो हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं एट द मोमेंट, ट्राइबल लोगों के साथ.
क्या हो रहा है कि जैसे मैंने ट्यूबिकुलोसिस मेंशन किया इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन लोगों का सिकल सेल एनीमिया वहां पे बहुत रैम्पेंट है। सिकल सेल एनीमिया तो तो पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्कीम्स आए थे, बहुत सारे एंटाइटलमेंट्स आए थे, तो डॉक्टर्स बोले कि हम लोग एक सिकल सेल यूनिट खोलेंगे कोरापुट में फॉर एग्जांपल। वो 2016 में वो लोग प्लान किए थे, लेकिन वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया। क्योंकि एक चीज होता है कि इन लोगों के ग्राम पंचायत के जो फंड्स आते हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन जो आप पूछ रहे हैं, इन लोगों के जो ग्राम पंचायत के फंड्स आते हैं, इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। People don't even know that there is a certain fund for these units to be constructed or to materialize. उन लोग के पास मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इन लोग के पास ऐसे फंडिंग है करके। अब वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो फंड्स कैसे मतलब उन लोगों से whether it's being utilized or not, उन लोगों को पता भी नहीं है। तो अगस्त 2016 में एक स्टडी आया था जहाँ पे वो लोग भुवनेश्वर से ऑर्डर लाए कि they will open a sickle cell unit in कोरापुट specifically, लेकिन वो कभी भी हो नहीं पाया, वो materialize नहीं हो पाया ठीक से। So a lot of these things are one of the major, क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं है कि they are entitled to this particular scheme हो या health का scheme हो या social entitlement, they don't even have an idea. So that is where हम लोग उन लोग को बोलते हैं, in convergence with the government, in licensing with the government, we tell them what they are entitled to. आपकी बातों से डॉक्टर साहब ये लगता है कि ये जो ट्राइबल हेल्थ है, ट्राइबल हेल्थ केयर जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर पर निर्भर है। क्या प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है? वही बोल रहा हूँ ना, तो हम लोग CYSD जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, they've been operating in the tribal belt for over 40 years. CYSD has been organizations like CYSD and other civil society organizations, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं है किशोर जी। ट्राइबल हेल्थ के जो जितने भी फंड्स आते हैं या जो भी, इवन इफ वी आर ट्राइंग टू टेल देम, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट अ सेकंड सर, एक्सक्यूज मी सर, yeah, I'm sorry, I was just checking with my colleague, she's just joining. Okay sir. Yeah, there was some problem with the link, so so ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है किशोर जी। एट द फील्ड लेवल हम लोग जितने भी हम लोग ट्राई करते हैं टू अटैच देम विद दोस हेल्थ स्कीम्स, वी बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन CYSD has been doing a great job, other CSOs have been doing a great job, but to some extent we cannot go all in. So that is one of the major drawbacks and setbacks that we are facing also as civil society organizations at field level. तो हेल्थ स्कीम लिंकेजेस बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में। डॉक्टर साहब, मैं झारखंड के ट्राइबल एरिया से आता हूँ। हाँ। और मैंने अपने अनुभव से देखा, मैंने PhD भी ट्राइबल एरिया पर किया है अपना। तो मैंने देखा है एक बात और कि जैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस का जिक्र किया, मलेरिया भी बहुत कॉमन है वहाँ पे। यस, बट वो एक चीज है कि इफ फॉर एग्जांपल मलेरिया एंडेमिक एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एट द मोमेंट नाउ इफ यू सी कोरापुट में भी more than I think 60 to 61% is malaria endemic, but concentration is given on sickle cell anemia because of the death rate. जितना भी death rates होते हैं, that happens because of sickle cell anemia. So sickle cell anemia has been given that kind of concentration in terms of मतलब in terms of health। हम लोग जो देखे वहां पे मलेरिया rampant है, लेकिन you'll see a lot of, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं about women also, women health में you will see iron deficiency anemia is rampant, and this is post so this is post
pregnancy as well. I mean, after the child is born, mother experiences more bouts of iron deficiency anemia even when she is pregnant. So even these issues we are seeing at the field. एक बात और मैंने देखा है कि जो जंगल के इलाके हैं और जंगल के आसपास जो गांव है, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है और पता नहीं चलता कि वो क्या बीमारी थी उनको। ये जागरूकता की कमी या सुविधाओं का अभाव है? दोनों मैं बोलूंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, they're not aware कि what has happened to them. मैं हम लोग जब when we started the conversation, I very clearly mentioned कि they don't even know what they're suffering from. जैसे उन लोग को अगर निमोनिया भी हो गया और उन लोग का, जैसे आप बोले, उनका देहांत भी हो गया, it is because of two things. One is lack of awareness, second is lack of healthcare, lack of access to healthcare. तो दोनों हो सकता है, it is both. They don't even have an idea कि उन लोग को निमोनिया हो गया है. They don't even have an idea कि उनको अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उनका डेथ हो गया उनकी वजह से. Their family, they have no idea. उन लोग को अभी भी मिथ होता है कि ये बुरा काम की वजह से हुआ है. Because there's a bad time, it's a bad omen. So that is where we kick in and we tell them about these mythbusters. लेकिन जब कोविड आया था, ये लोग बहुत, they were very open towards taking vaccinations. So things like that. और ये हाइजीन के मामले में भी मैंने देखा है, आदिवासियों का जो गांव है, बड़े साफ सुथरे और सफाई से रहते हैं ये लोग. Not specifically, किशोर जी. It is very subjective. अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे सोच लीजिए एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत एक पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में काम कर रहा है, ग्राम पंचायत वहां पे जितने भी एक्सेस करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी, जैसे एक रेवेन्यू विलेज हो गया, एक हैमलेट हो गया. रेवेन्यू विलेज में पैसे जाते हैं, उन लोग का अवेयरनेस दिया जाता है, उन लोग को पता है कि सैनिटेशन क्या होता है, क्लीनलीनेस क्या होता है. कुछ हैमलेट विलेजेस को ये पता नहीं होता है क्योंकि वहां पे पैसे नहीं जाते हैं, अवेयरनेस नहीं जाता है और ग्राम पंचायत वहां एक्सेस भी नहीं कर पाता. और ये लोग को प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी ठीक से एक्सेस नहीं हो पाता. सो देयर आर lot of things culmination put in one. So that is the problem. इनमें ये भी देखा गया है कि 15 साल की उम्र से ही ये लोग बीड़ी पीना, देसी दारू पीना, ताड़ी पीना, ये खैनी खाना, ये शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसमें इनको पैसा भी नहीं लगता, खुद बनाते हैं और खुद. तो क्या ये भी एक वजह है इनके ज्यादा बीमार पड़ने का? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल हेल्थ कंडीशन तो खराब होता है. दूसरा चीज ये है, इन ट्राइबल हेल्थ बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए हैं जहां पे इट इज वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर दैट a lot of mental health conditions have also been coming up because of intoxication and addictions. वो लोग को जैसे देसी शराब हो गया, वो लोग पी लिए तो वो एक मेंटल हेल्थ एडिक्शन हो जाता है, which in turn causes obviously physical issues. तो nowadays हम लोग we are seeing in light, I mean mental health conditions of tribal belts are also coming into light now. तो एक intoxication addiction भी एक आदत है, which is one of the major reasons, like you mentioned, you're absolutely right. Mental health condition की वजह से भी intoxications are rampant in the tribal belt. Yeah. आप अगर कंपेयर करें ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच, तो मेंटल हेल्थ कंडीशन बेटर किनका है? रूरल एरिया वो हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं. जैसे वी लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे, दे लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे. तो इट सिचुएशन डिपेंडेंट. तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. हम लोग के जैसे वी आर ऑलवेज इन द रैट रेस कि हम लोग कुछ अचीव करना है हर दिन. दे हैव नो सच, दे लिव मतलब बाय द डे, दे लिव बाय द डे, जस्ट कीप हम लोग का वैसा नहीं है ना. So it depends. It's very subjective and it's very situation dependent also. Sure.
थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बने रहिए, सेकेंड राउंड में फिर सवाल पूछेंगे आपसे। आई थिंक स्मृति हैज जॉइंड, या मिस स्मृति दास, आपने ज्वाइन कर लिया? yes joined. वेलकम स्मृति जी। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल ये है आपसे स्मृति जी, ये ग्लोबलाइजेशन एरा में जहां ट्राइबल पॉपुलेशन का भी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहां बाकी की तुलना में ट्राइबल पॉपुलेशन का हेल्थ इंडिकेटर इतना खराब क्यों है? क्या आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ट्राइबल एरिया में जो हेल्थ इंडिकेटर हैं ट्राइबल पॉपुलेशन का, वो इतना खराब क्यों है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन का भी बाकी की तरह? राइट, देखिए हेल्थ इफ वी कम टू द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन वो रिसाइड कहाँ करता है। यूजुअली ट्राइबल्स जो है डोमिनेटेड एरियाज जो है वो या तो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटीरियर विलेजेस में होते हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होते हैं, टाइमली वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, कुछ एरियाज में नेटवर्क्स नहीं होते, वो एम्बुलेंस को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनके चलते जो उनको हेल्थ इफेक्ट करता है, उनका हेल्थ इफेक्ट होता है। और बहुत सारे चीजें क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशंस उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है, इसीलिए फिर वो मेडिकल फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा बिलीव भी नहीं रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो लोकल तांत्रिक वगैरह होते हैं वो उन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग हॉस्पिटल्स, दे विजिट सच काइंड ऑफ पीपल। उनको लगता है कि इनसे जाके मिलेंगे, ये कुछ बोल देंगे, कुछ फूंक देंगे, ये चीज ठीक हो जाएगा। तो ये इस टाइप के माइंडसेट्स भी होते हैं ट्राइबल्स में। तो अपार्ट फ्रॉम कुछ ट्राइबल्स है जो दे बिलीव इन मेडिकल फैसिलिटीज, वो जाना चाहते हैं, बट उनके लिए ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होते उनके पास, तो वो जा नहीं पाते। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। स्मृति जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों की एक ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी ने 2018 में एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि जो ट्राइबल्स के लिए जो स्कीम चलाए जा रहे हैं उसको इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग के लिए डेटा की कमी है। क्या ये सच है? आपको लगता है आप फेस करती है ऐसा? देखिए, डेटा को लेके प्रॉब्लम अभी तक तो हुआ नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितने भी हमारे ऑपरेशनल एरियाज है जहां हम काम करते हैं, we have complete access to those areas, तो हम completely visit कर सकते हैं उस एरियाज को, और फिजिकल डेटा कलेक्शन भी हम कर सकते हैं। तो अभी तक डेटास को लेकर के हमारे साथ ऐसा कोई इश्यूज आया नहीं है, चाहे वो ट्राइबल को लेके हो या फिर कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को लेकर के हो। इसी रिपोर्ट में कहा गया था 2018 में कि माल न्यूट्रिशन और कम्युनिकेबल डिजीज ट्राइबल एरियाज के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। क्या 4 साल में आपको लगता है कुछ सुधरा है? देखिए, यस, माल न्यूट्रिशन और ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये सारी चीजें जो है ये ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आज भी अगर हम भारत के कुछ गांव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके पास ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी नहीं है, वो आज भी वो नाले का पानी पीते हैं। आज भी हम गवर्नमेंट की तरफ से हम डिक्लेयर कर देते हैं एक गाँव को ODF है, बट हम अगर उस गाँव में और भीतर तक जाएंगे तो हमें एक भी शौचालय नहीं दिखेगा। अगर शौचालय होता भी है तो हम हमारा व्हाट वी डू कि हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, हमें टारगेट मिलता है कि हमें इतना इतना काम कर देना है और हम वो उसको अचीव कर देते हैं। बट द थिंग इज दैट कि हमें उस चीज का क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। व्हेन वी टॉक कि वो गांव जो है वो ODF हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का बिहेवियरल एस्पेक्ट भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर हम उनके लिए शौचालय बना रहे हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो इन चीजों को का इस्तेमाल करे। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है। मेडिसिन वो लेते नहीं है, फैसिलिटीज जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे वो जा नहीं पाते, उनको टाइमली मेडिसिन मिलता नहीं है। प्लस जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहां पे भी उनको मतलब ऐसा ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसे मेंटालिटी है कि नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो फिर वो आंगनवाड़ी से भी वो जा नहीं पाते हैं। उनको फॉलिकल जो भी टैबलेट्स होते हैं एनीमिया के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो दिया जाता है वो उनको मिल नहीं पाता है।
और ट्राइबल पॉपुलेशन में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि भी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चा जो है आपका वो एकदम मालनरिश्ड पैदा हो, ठीक हेल्थ के साथ पैदा ना हो। ये सारी चीजें हैं, ट्राइबल बेल्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक बात और है विमेन एम्पावरमेंट का। जी, महिलाएं खास करके ट्राइबल विमेन जो है वो घर का काम भी करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, जंगल में लकड़ियां भी चुनती है। मैं झारखंड का हूँ इसलिए झारखंड के अनुभव से बता रहा हूँ, जंगल में लकड़ियां भी चुनती हैं। लेकिन राइट्स, अधिकार जो है, फैसला करने का अधिकार सारे पुरुषों के पास है। ये अच्छी बात है कि अब एक आदिवासी महिला हमारे राष्ट्रपति बनने जा रही है, बहुत खुशी की बात है जी। तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट है ये ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच, महिलाओं के बीच कब पहुंचेगा? आपको लगता है कि इसके लिए कुछ क्या करने की जरूरत है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम भी झारखंड से हैं, मेरा घर जमशेदपुर में है और हम अच्छा। झारखंड में 2 इयर्स 5 मंथ्स काम कर चुके हैं वहाँ पे। मेरा सब कुछ पढ़ाई वगैरह झारखंड से ही हुआ है, तो उस हिसाब से हम और आप जो है एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों आदिवासी हैं वहाँ के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं संथाल आपके परगना का हूँ, आप छोटा नागपुर के हैं। जी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जहां तक बात आता है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्राइबल का ही प्रॉब्लम नहीं है सर। आप अगर नॉर्मल एक सिटी में जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लिटरेट होते हैं, आप अगर वहां पे भी जाके देखें तो वहां पे भी जो है मेल ही डिसीजन लेता है। अगर कोई घर पे आता है, पूछता है कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन है, तो हम हस्बैंड का ही नाम लेते हैं या फादर का नाम लेते हैं। कभी भी आज तक हमने अपनी माँ का नाम नहीं लिया है। तो ये जो है, ये हमारा इंडिया का कल्चर ही है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ये यहाँ पे ऑलवेज मैन इज गिवन प्रायोरिटी, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और फीमेल्स जो है हमेशा ये देखा गया है कि वो घर पे रहती है, घर का काम करती है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है। ये सारी इश्यूज है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ट्राइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्राइबल में फीमेल ज्यादा एम्पावर्ड है हमारे से। हम जैसे सिटीज में रहते हैं, घर पे रहते हैं, हमारे से ट्राइबल वुमन बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। वो घर का काम करती है, वो खेत में जाती है, हल जोतती है, लैंड प्रिपेयर करती है। अगर बात करें एनटीएफपी का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो खुद अकेले वो जाती है जंगल में, इमली या फिर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एनटीएफपी सारा वो लेके आती है। लेकिन जब तक ये बात आता है बेचने पर, तो फिर ये कंप्लीट डिसीजन जो है उसके हस्बैंड पे आ जाता है। जी ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो है हम इसको एम्पावर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, डिसीजन मेकिंग ये एक बड़े लेवल पे हम उसको मॉनिटर ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंडिविजुअल लेवल पे हमें देखना होगा कि एक फीमेल जो, एक ट्राइबल फीमेल जो है, वो सच में क्या अपने घर पे वो अपना मुंह खोल पाती है, वो डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर पाती है कि नहीं। तो इस चीज को ना हम हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ीसा में, जिसको हम वंदन विकास केंद्र बोलते हैं। प्रधानमंत्री वंदन योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके तहत हम वंदन विकास केंद्र बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम डिसीजन मेकिंग पार्ट पे फोकस करते हैं। किस तरीके से करते हैं? एक फीमेल को अगर अकेले पूछा जाए कि क्या आपका पति आपको मारता है, या फिर क्या आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, या फिर क्या आपको आपका हक दिया जाता है घर पे, क्या आपको बोलने दिया जाता है, तो वो अकेले शायद वो ना बोले। बट यही अगर वो ग्रुप में हो 4-5 जन का, और वो भी ऐसे ग्रुप में जो उसके लिए फेमिलियर फेसेस हो, उसी के गांव के कुछ लोग हो, कुछ औरतें हो, जिनके साथ वो बैठेंगी, बातचीत करेगी, अपना प्रॉब्लम शेयर करेगी, तो हाँ, हमें वहां पे बहुत सारी चीजें पता चल पाएंगी कि क्या हम सच में एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। वहां पे वो अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कर सकते हैं, बट हाँ, टाइम लगेगा इनको समझाने में। और बहुत बड़ा योगदान मेल काउंटर पार्ट्स का भी रहेगा। हमें कहीं ना कहीं उनको भी समझाना होगा कि वो भी फीमेल को जो है एक स्पेस दे, और यहाँ से हमें फीमेल्स को भी समझाना पड़ेगा। दोनों तरफ से ये चीज पॉसिबल होगा। स्मृति जी, मैंने जो पीएचडी का थीसिस लिखा था तो मेरा टॉपिक यही था, तो मैंने पहाड़िया ट्राइब पे मैंने थोड़ा काम किया था। yes. तो पहाड़िया ट्राइब जो है आज भी जंगलों और पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं, और सुविधाएं बिल्कुल नहीं है वहां, और उनकी संख्या बड़ी तेजी से कम होती जा रही है, क्योंकि सुविधाएं नहीं है तो वो बीमार होते हैं, और बीमार होते हैं उनकी मौत हो जाती है। सरकार या एनजीओ को बहुत ज्यादा वहां तक पहुंच नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जी। उनके लिए क्या किया जाए? क्योंकि वो पहाड़ छोड़ना नहीं चाहते, वो जंगल छोड़ना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि अगर हम शहर में आएंगे, अगर हम देवघर आएंगे, जमशेदपुर आएंगे तो मर जाएंगे।
तो क्या करना चाहिए, उस तक कैसे पहुंचे, सुविधाएं कैसे पहुंचे उन तक? देखिए, झारखंड सरकार का एक परियोजना चल रहा है उड़ान करके, जो जेएसएलपीएस है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, वो करवा रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उड़ान परियोजना के तहत हम ऐसे जनजातियों के पास पहुंचते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं आ रहे तो हम अपनी चीजों को उन तक लेके जा सकते हैं। अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज के पास नहीं आ सकते हैं, अगर वो पानी पीने इतने दूर, मतलब उनको, तो हम उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं। वहां पे हम ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए लगवा सकते हैं, एक घर बनवा सकते हैं उनका। पीवीटीजीज का एक अलग सा एसएचजी ग्रुप फॉर्म करवा सकते हैं, जो कि झारखंड में बहुत हो रहा है। एसएचजी ग्रुप के थ्रू जो है उनका हम उनको सोशल एंटाइटलमेंट्स के साथ साथ उनको फाइनेंशियल भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी। और हाँ, ये चीज है कि उनका जो पॉपुलेशन है वो तेजी से घट रहा है। वो इसलिए घट रहा है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आना नहीं चाहते यहाँ पे। उनके लिए भी सरकार ने घर बनाया था, वो सब घर छोड़ के वो वापस अपने पहाड़ों में चले गए। ये उनके बिहेवियर को, इसको हम नहीं बदल सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अप्रोच को चेंज करना होगा, हमें उन तक पहुंचना होगा और उनके लिए हमें फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी होंगी। हमने गुजरात में भी ऐसा ही देखा। जब मैं गुजरात में था तो मैंने स्टोरी भी की थी। नर्मदा प्रोजेक्ट जब चल रहा था तो जंगलों से जब उनको हटाकर बसाया गया नर्मदा जिले में, तो वो वहां रहने नहीं गए। वो कह रहे थे कि हम डूब जाएंगे नर्मदा में, लेकिन नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल से उनको हटाया गया। वो छोड़ना नहीं चाहते, वो जंगल पहाड़ छोड़ना नहीं चाहते। आप स्मृति जी हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी सवाल शंकर जी पूछेंगे। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. I will move away from Jharkhand and Odisha to some other area. It's a common question to both you, Dr. Raman Nair, and Smriti also. There is a general feeling that all the communicable diseases that we just spoke about, malaria and other aspects, came about when tribals started interacting with modern human beings. The classic example is the Andaman Islands, where there were 4 tribal populations, 2 of which vanished. The third is on the way to vanish because of the Great Andaman Trunk Road, which passes through the Jharwa Belt. Literally, this is the only tribal that has no contact with the outside world. And there is one in Paraguay also, where they don't have contact with the outside world, but they don't have diseases, so-called diseases of the modern human being. Now, do you think that the spread of diseases happened when people started contacting these tribals, whether it is for development or mining or any other aspects? Did that happen that way? Is it better to leave them alone if you have some tribal population that would like to stay alone? Yes, Dr. Raman Nair. Well, sir, no, if I don't want you to be repeating that question again, because that'll be a task for you. But then, if you can just repeat again, because I think I lost signal. I mean, no. The crux of it is that there is a general belief that if you leave the tribal population, if you don't, most of the diseases that the tribal population now have is because they started getting in contact with the modern human beings. And the classic example is in Andamans, where 2 tribals vanished because of common cold. And the third one is about to vanish. That is the Jharwa community, because of the Great Trunk Road that passes through the Jharwa belt. The Sinhalese do not have diseases as the modern diseases because they don't have contact. And so is it in Paraguay. So what is your general belief that is it because of contact that they have been getting diseases, especially people go to that area for mining and other economic activities? Yeah, I mean, there are chances. I mean, I won't vouch for it by saying that this is the truth. I mean, I don't know what to say on that. But then, honestly speaking, if you ask me about even if we say that we have to leave that tribe alone, or let them have their own livelihood, let's not go and bother that ecosystem that they've created around themselves and try to spoil it. And but at the end of the day, at times they want to be heard, right? Even they want a solution to their problems. Sometimes they do not come out in the world and ask us for it also. They don't ask for a solution as well. But then I'll give it a 50-50 by saying, modernization, they're reaching out to them for economic activity, all that is fine. But I think sometimes it's good to leave them alone also. Because you see, when you read archaeology, when you go back in time,
when you go back in time, you see a lot of we're only talking about these names that you talk about these tribes. That's because we know their names. That's because there's a lot of tribes we don't even know their names. We don't even know their existence. We don't even know, be it in India, be it anywhere, in Andamans, like you mentioned, be it anywhere, there are many tribes we don't even know their names. So if you ask me, I'll probably give it a 50-50. I will not, vouch for it by saying, they have to be left alone, or they, or we should go out there and, try to disturb their ecosystem that they've created around themselves. I think I'll probably give it a 50-50. But then their problems also should be heard. I mean, we should be paying heed to what they also want, and try to cater to their needs if they want help, that is, depending on the situation. Yeah. Yeah, Ms. Prati? Yes. So I feel कि जब ट्राइबल्स हमसे मिलना चालू किए हैं, हम इस चीज को एक वी कैन नॉट मेक दिस एन इशू कि हमसे वो मिले फिर जाके उनके लाइफ में जो कम्युनिकेबल डिजीजेस आए और इनको सारे इश्यूज होने लगे. ये चीज नहीं हो सकता है. ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम उनके बेटरमेंट के लिए, हम उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं. हम इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे चलते उनको दिक्कतें आए, हमारे चलते वो प्रॉब्लम्स फेस करें. वो डिजीजेस फेस करते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि उनका इम्यून लो होता है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं होता है बॉडी में, उनको टाइमली उनको जो है वो क्योर नहीं कर पाते. तो कहीं ना कहीं उनका भी बॉडी, उनका भी एनवायरमेंट कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट इज नॉट अस कि हम उनसे मिलने जाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं तो हमारे चलते ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. No, I spoke this in context with the Jharwa community in Andamans. Actually, they do not want contact with the modern people. But unfortunately, what happened was the government built that huge road for tourism purposes. They built it through the Jharwa community. Now they are exposed to gutka, they are exposed to marijuana, they are exposed to alcohol, and worst of all, they have communicable diseases which they didn't have over centuries. So that is the point that I was trying to make. Some tribes. Yes. Just but it's debatable. I think, Shankar sir, I'd like to add on this. If you are saying that they did not have it, that's because it came into the light now. Think of it that way. They probably now, for example, if it was a normal influenza, it was a flu, or say the kind of, where the tribal belts that they live in, which is we don't have access to, you think malaria is not endemic there? Malaria is endemic there for sure. I know it for a fact. I'm telling you, because now that tourism has approached that area, and they've like you said, they've constructed a road through it, and they want to commercialize it or whatever you call it. Now because they got it, they've come out in the open and people got to know that that they have this issue. Because we did not know that particular area, the geographical location that ever existed, and we wanted to reach that place through tourism. Now we get to know that okay, they have these issues. So it all depends. It all boils down to the information we have. Now because we reached out there, we have information that because of us they got communicable diseases, or there is chances of them having TB or stuff like that. But when we didn't have the information, that doesn't mean they didn't have it. It's because we got the information now, which is why I'm still saying it's debatable. Yes, Priti, over to you. Very debatable, yes. Very debatable. Adding to just answering to Shankar sir's question, सर ने ये कहा कि ट्राइबल्स को हमें ऐसे सिचुएशन में उनको छोड़ देना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए. No. So what I feel, Priti, you got me wrong in the sense that when you discover, for example, the Sintilis, we know that they are existing. We know the type of diseases that they have. They don't have any of the modern communicable diseases. When we know that they're existing, then should we intervene or not? And when we know that they don't have any endemic diseases that we know of, should we intervene? For example, the Jharwa community that I was speaking about, there is historical data to show that they didn't have any of the communicable diseases. Now, right from 1940s onwards, there was one Sikh gentleman who didn't go near them but studied their health conditions. So if, for example, the Sintilis now, they only have people go on top with the aeroplane and then see whether they're healthy or not, and they're healthy, of course. Right. So the Jharwa now is on the way out. The other two tribes, the Andamanese and the other community, went out because
they were so-called integrated to the modern community. That's when the trouble started. Of course, as I agree with Dr. Raman Nair that it is a debatable topic, and there are moments this way and that way. But then I'll move on to another topic which is closer to Smriti. I think I'll ask her question is the Niyamgiri hill range in Odisha, which is close to the way you work, is home to the Dongirakhond tribe. The tribe respect nature and worship the mountain god Niyam Raja and the hills he presides over, including the 4,000-meter mountain of law called the Niyam Donga. Since the area is rich in natural resources, there were efforts to mine some of the minerals which the tribes resisted tooth and nail. What is the status now, their health and their economic status? Yes. So coming to the health and economic status of tribals in particularly in Koraput district, तो जो मतलब हेल्थ का तो ये इश्यूज है ही क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरापुट इज कम्प्लीटली अ फॉरेस्ट डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, फॉरेस्ट डोमिनेटेड एरिया। तो यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे आज भी रोड्स नहीं बने हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच नहीं पाती है। एम्बुलेंस पहुंचना तो दूर की बात है, उस एरियाज में नेटवर्क्स नहीं आते, जिनके चलते जो है वो डिजिटल जो डिवाइसेस है उनको वो यूज नहीं कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन से भी वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, तो टाइमली जो है उनको मेडिसिन नहीं मिल पाता, टाइमली वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं अवेल कर पाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट एक ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज को वो अप्रोच, कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो अपने तरफ से अप्रोच करना नहीं चाहते हैं। उनका जो ओल्डर जनरेशन ट्राइबल्स है वो ये बिलीव करते हैं कि किसी लोकल बाबा, किसी तांत्रिक के पास चले जाएं और मेडिकल फैसिलिटीज पे पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि हम किसी तांत्रिक के पास जाके वो कुछ मंत्र पढ़ देगा और हमारा तबीयत जो है ठीक हो जाएगा। ये इस टाइप की कुछ मेंटालिटीज भी है जिसके चलते भी जो है उनका हेल्थ इफेक्ट होता है। और रहा बात माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, ये सारी चीजें तो ट्राइबल्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में चाइल्ड मैरिजेस, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है, जिससे भी जो है वुमेन एंड चाइल्ड के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कमिंग टू द इकोनॉमिक पार्ट, ये यहाँ के जो ट्राइबल्स है कोरापुट के, बेसिकली इनके दो टाइप के प्रोफेशन बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। पहला एक है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे मोटे खेती करते हैं ये लोग अपने, और इसको काफी कम अमाउंट में ये कंप्लीटली जो भी एग्रीकल्चर करते हैं ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, और उसमें से अगर कुछ बच जाता है तब वो उसको सेल पे लेके जाते हैं। ये इनका एक पर्सपेक्टिव है एग्रीकल्चर करने का। और यूजुअली वो लोकल सीड्स को ही सो करते हैं, उसी से वो अपना खेती करते रहते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, और अगर अमाउंट कुछ बच जाता है तो उसको फिर वो नियर बाय लोकल मार्केट्स पे या फिर बाटा सिस्टम के थ्रू उसको वो बेच देते हैं हाउस होल्ड्स में। और दूसरा प्रोफेशन ये आता है ट्राइबल पॉपुलेशन में कि वो ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे कोरापुट में जो है दे आर NTFP गैदरर्स। NTFP गैदरर मीन्स नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गैदरर्स। तो ये यहाँ से भी ये कहीं ना कहीं अपना इनकम जनरेट करता है NTFPs कलेक्ट करके और इसको नियर बाय मार्केट्स में सेल करके। सो दिस इज हाउ देयर लाइफस्टाइल इज। Okay, now I'll ask a common question again to both of you. Kishore did ask you about women empowerment. I'm sorry. My question is about what is the status of the girl child in these tribal areas, starting with you, Smriti, and then Dr. Raman Nair. Status of girl child? Yeah, in these tribal belts. Okay, like you are asking for the girl count? No. I'm asking their health status, their education status, their progress, and other things. What is this? What is their current status? Yes. So yes, if we are coming to the status of girl child, tribal girl, तो यहाँ पे सरकार ने स्कूल्स बनाए हैं, वहाँ पे फीमेल्स जो बच्चे हैं गर्ल चाइल्ड है वो जा रहे हैं और उनका पढ़ाई हो रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जिनको रेजिस्ट भी किया जाता है कि वो पढ़ने ना जाए। तो ये दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे चलता है कि आज भी ट्राइबल्स ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि फीमेल जो है, जो बच्चियां जो है, उनको जाना नहीं चाहिए स्कूल में, और फिर बहुत कम उम्र में उनका शादी करवा देते हैं और फिर वो अपने इन लॉज के पास चले जाती है। और फिर एक और एस्पेक्ट है कि जहाँ पे ट्राइबल्स थोड़े बहुत इकोनॉमिकली जहाँ पे स्ट्रांग है, वहां पे वो अपने बच्चों को जो है पढ़ने भेजते हैं। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो स्टेटस जो है ये बहुत ही ज्यादा पुअर है यहाँ पे। यहाँ पे फीमेल्स जो है
अगर स्कूल जाते भी है तो वहाँ के स्कूल के कंडीशंस अच्छे नहीं है, टीचर्स नहीं होते हैं, या फिर बच्चे जो है उनको वहाँ पे खाना सही से नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीजें के चलते वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो स्कूल जाना भी प्रेफर नहीं करते हैं। Dr. Raman Nair? Well, sir, I'll just add to what Smriti said. Well, honestly, in these tribal belts, they have no awareness about what sanitation is, like I mentioned. And, so that's where we kick in, and we try our best to make them aware about what sanitation is. And most importantly, I think we were discussing this, Smriti and I, and it probably slipped out of our minds. We were talking about, sanitary napkins, the use of sanitary napkins for a girl who has just hit puberty and then, post that. I think that's where organizations like us, we kick in and tell them as to, that the use of sanitary napkins are really important in tribal belts, because they have no awareness about it. And even if they do, because of these traditional practices that they've been, been a part of for so long, they do not want to break that chain, They just don't want to get out of that shell, They don't want to think out of the box and think that, sanitation is the way forward, a healthy living is the way forward. So things like that. So I think that is my, that's my opinion about what you asked me, Professor. Yeah. So I think we're running short of time. But I'll ask one question, which I hope both of you would give it in 1 or 2 sentences. We all speak about tribal medicine, which is supposed to be the tribal honey is supposed to be good. The tribal, some of the medicines are supposed to be extremely effective, but it has not been promoted the way it should have been. So what's your viewpoint, especially the tribal medicine? Tribal medicine, I've not, we've not, I don't know if Smriti will be knowing this because I've not dwelled too much into it. Smriti, any idea? Yes. Raman, जो हमारे NTF पे गैदरर्स है ना, वहाँ के फॉरेस्ट में there are some roots, कुछ ऐसे मेडिसिनल रूट्स भी मिलते हैं जो कि लोकली मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है? तो we need to promote that and we are on a way of promoting it. हम NTF गैदरर्स का इसीलिए तो VDVK बना रहे हैं ना, ताकि हम जिस एरिया में जो चीज अबेंडेंटली पाया जा रहा है हम उस चीज को एक प्रोडक्ट बना के हम बेच सके. So we are into it, sir. We are doing it. That's great. Actually, that's great. Actually, I come from Kerala, where we have 2 great tribal community in Wayanad and one in Attapadi. But there are a lot of efforts where people go there and try to, steal the tribal medicines. And in fact, unfortunately, a tribal doctor, rather his local doctor, got killed because he refused to reveal the ingredients of one particular tribal medicine. That happened in Kerala. So with this particular session, I thank both of you for a wonderful session. I think we could have extended this more because this is an important topic. Thank you very much for being with us and sharing your thoughts on a very, very important topic. Thank you so much for having us over, Professor Shankar. Very nice interacting with you all. Thank you. Thank you so much. Welcome back. We now move on to Health Dama, a popular health capsule put together by Kishore Malviya. This time, the topic is onset of monsoon, preparedness for holistic health. Over to Health Dama. नमस्कार। लगभग पूरे देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लोग बहुत खुश हैं। फसल के लिए तो अच्छा है ही, तपती गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। लेकिन मॉनसून के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये अपने साथ कई बीमारियां लेकर भी आता है। क्यों बरसात में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? किस तरह के इन्फेक्शंस इस मौसम में फैलते हैं? खाने पीने में किस तरह के परहेज़ की ज़रूरत है? और सबसे बड़ा सवाल कि हम क्या करें कि मॉनसून में बीमार ही ना पड़ें? इन सारे सवालों का जवाब दिया है डॉक्टरों ने। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। क्या बरसात के दिनों में आर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ जाती हैं? डेफिनेटली बरसात के टाइम पे आर्थराइटिस की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है और मैंने देखा है कि पेशेंट्स में भी सर्ज होता है। द स्वेलिंग्स इन द जॉइंट्स they also increase, and sometimes because of the increase in the uric acid, because of the increased humidity and the patients not taking proper water intake and dehydration,
and this gouty arthritis also sees a flare. तो बरसात के आने पे जोड़ों में दर्दें जो है वो बढ़ जाती हैं और उसका कारण या तो ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज वाटर मॉइस्चर होता है उसके कारण और प्लस बिकॉज ऑफ बरसात के कारण जो नॉर्मल एक्सरसाइज पैटर्न होता है पेशेंट्स का, खाने में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, अगर वो नहीं हो पाता तो उस कारण और प्लस मेडिसिन अगर टाइम से नहीं ले रहे तो उस कारण भी गठिया में बढ़ा देखा गया। तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, बरसात शुरू होने से पहले ऐसा क्या करें प्रिवेंटिव कि वो इन समस्याओं से बच सकें? मेरे ख्याल से जो पेशेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगी वो ये कि जब बारिशों का मौसम आता है तो ये नहीं कि अगर क्योंकि थोड़ा सा इन लोगों के लिए ठंडा हो जाता है तो ये लोग अपने बिस्तर में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो अपनी एक्टिविटी लेवल को जो पहले मेंटेन करते हैं उसको मेंटेन करना चाहिए और सेकेंड थिंग इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इंक्रीज प्रेस्पिरेशन होती है, पसीने ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ह्यूमिडिटी। तो जो डिहाइड्रेशन है पार्ट, उसके लिए वाटर इनटेक को अपना इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी होता है और अपनी दिनचर्या को जितना भी हेल्दी बनाना है मतलब वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि जो बाहरी वातावरण बदल रहा है, जैसे बारिश हो रही है उसके साथ ठंडा लग रहा है तो वापस अपने बिस्तर पे आ गए, उस चीज़ को अवॉइड करना है। सो मेरे ख्याल से जो एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करते हुए और अपने खान पान पे ध्यान रखते हुए उस पे काम करना है उनको। देश के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली और आसपास भी अब होने वाली है और ये आप कहें संयोग है या क्या है कि इसी समय कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं देश के कई इलाकों में। क्या मानसून की बारिश से इसका कोई संबंध है? क्या मानसून की बारिश इसको एम्पलीफाई करेगा या कंट्रोल करेगा? कुछ रिश्ता है? आई थिंक कि मानसून का मतलब जो वेदर है ये टेम्परेचर बिल्कुल एप्ट होता है किसी भी वायरल रेप्लिकेशंस के लिए और इसीलिए अगर आपने मतलब जब कोविड नहीं भी था तब भी जब ये मौसम आता था तो तब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते थे, which is maybe because of the dampness, because of the because of the weather conditions, patient not doing their regular activities, preferring to stay more indoors, and जो एक perpetual problem होती है chronic patients के साथ कि अगर वो अपनी दवाइयों के साथ भी compliance नहीं करते हैं तो ये भी add on करता है। अभी तक सर्दियों के टाइम तक और गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा फूड हैबिट्स हमारी बदलती हैं, लेकिन जैसे मानसून आता है तो मुझे लगता है और भी तला वाला जो खाना खाते हैं प्लस मोर ऑफ दी मसाला वगैरह जो नॉर्मल हाउस होल्ड फूड्स में लोग यूज कर लेते हैं और पेशेंट भी उसको कंज्यूम करता है। इस समय एकदम से डिफिकल्टी आती है क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक जो जूसेस बनते हैं और बिकॉज ऑफ द इनएक्टिविटी उनमें भी थोड़ी सी शीतलता आती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मॉनसून के आने से अगर पेशेंट्स अपने दोबारा से अपनी पूरी रहने की पद्धति को नहीं से ठीक से देखता है तो वो इन सब चक्रों में पड़ सकता है और जोड़ों में दर्दें प्लस कोविड का इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शंस इस टाइम मौसम में क्योंकि वेदर जो टेम्परेचर है इट इज वेरी मच एप्ट फॉर ऑल द वायरल डिजीजेस टू फ्लेयर अप। मॉनसून में टेम्परेचर के फ्लक्चुएट करने से ज्यादातर बीमारी होती है, तो क्या इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है? जी नहीं सर, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन मॉनसून का जो सीजन है वो ओवरऑल बीमारियों के लिए काफी प्रोन माना जाता है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हाइजीन जो है वो एक तरह से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कोई भी डैम्प एरिया जैसे होते हैं, जैसे हमारे घर में कई बार अगर किसी कारण ओस हो जाती है जैसे विंटर के महीनों में, या फिर हम मानसून के कारण ज्यादातर इंडोर रहना प्रेफर करते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा जो एक्सपोजर है नॉर्मल उससे वो कम होने के कारण हम बीमारियों के लिए और ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। बट ये कहना गलत होगा कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो मानसून के महीनों में कम हो जाती है। हमको हमेशा ही हमारे न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मानसून है, चाहे वो समर है या विंटर है। और
विटामिन डी जिसको हम कहते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी में, उसका हमेशा ही हमको थ्रू आउट द ईयर हमको ये करना, मेक श्योर करना चाहिए दैट वी आर ऑलवेज sufficient of vitamin D to prevent from the normal viral fever जो भी हम seasonal variations में देखते हैं, या फिर कोई भी और बीमारी है जिससे हमको लड़ने की क्षमता जो है वो विटामिन डी के सफिशिएंसी के साथ वो थोड़ी और बेटर हो जाती है। मॉनसून में वायरल फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं जी, और कोरोना के फीवर्स अभी इस समय चल रहे हैं और दोनों के सिम्टम्स लगभग बराबर हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये तो वायरल फीवर है, टेस्ट नहीं कराते हैं। जब डॉक्टरों के कहने पे टेस्ट कराते हैं तो वो कोविड निकलता है। दोनों में कैसे सिम्टम्स को देखते हुए कैसे अंतर करें? पहले ये हमेशा से ही एक चैलेंज रहा है हम सब के लिए, क्योंकि कोरोना और जो वायरल फ्लू या नॉर्मल फ्लू, सीजनल फ्लू जिसको हम कहते हैं, उसके सिम्टम्स लगभग कई तरह से सेम होते हैं, बिकॉज इट इज अ वायरल फीवर, सो इज कोरोना। तो कोरोना भी एक वायरल फीवर होने के कारण सिम्टम्स ओवरलैप जो है वो दोनों के ही होते हैं। लेकिन हमने जो ट्रेंड देखा है अभी जो पिछले 2-2.5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, जब कोरोना की केसेस में सर्ज होता है तो वायरल फ्लू जो है वो एक तरह से हम इतना कॉमनली नहीं देखते हैं जितना कोरोना को देखा जाता है। उसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, खासकर अभी गर्मियों के महीनों में जब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लोग इंडोर्स रहना पसंद करते हैं गर्मी के कारण, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो है उसका बढ़ जाता है। तो इसके सिम्टम्स में ज़्यादातर हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो यही देखते हैं कि शुरुआत या तो सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम से हो सकती है, थोड़ा बहुत माइल्ड फीवर जो है वो आ सकता है दोनों केसेस में, जो कि सीजनल फ्लू में भी हो सकता है और कोविड में भी हो सकता है। लेकिन कोविड जो है सर वो फ्रॉम वन फैमिली मेम्बर टू अनदर फैमिली मेम्बर, जिसका ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू द सीजनल फ्लू। ऑल्सो कोई जो भी हम वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जो कि खासकर हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनको क्रोनिक बीमारियां है, डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, वो सभी जो है वो कोरोना के लिए थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं। उनमें जो कोरोना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। इसलिए इन सब केसेस में हमको इररिस्पेक्टिव की सिम्टम्स जो भी है, चाहे वो मामूली खांसी है या खराश है गले में या फिर माइल्ड फीवर है 99-100 तक है, तब जब कोरोना के केसेस हर जगह, हर प्रदेश में अभी बढ़ रहे हैं, हम सबको एज प्रिकॉशनरी कोविड टेस्ट सबके लिए ही करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिससे मैं ये मैसेज दे सकती हूँ सब लोगों को कि आप कोई भी फीवर को जस्ट सीजनल फ्लू अपने आप डिक्लेयर ना करते हुए कोविड का टेस्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, लोगों की एक शिकायत ये भी रहती है कि आयुर्वेद में परहेज बहुत ज्यादा है। अब जैसे अभी आपने पकोड़े का जिक्र किया, अब बरसात में पकोड़े खाने का मन करे तो आयुर्वेद इसकी इजाजत नहीं देता है। तो कुछ तो ऐसा आयुर्वेद में होगा जो हमें थोड़ी छूट दे कि हम बरसात में कम से कम पकोड़े खा सकें या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम खा सकें जो साल भर नहीं खाते हैं आयुर्वेद को मानते हुए। तो ऐसा क्या है जो हमें बरसात में बीमारियों से बचाए और हमें परहेज पे थोड़ा सा कम ध्यान दे? देखिए, यहाँ जो परहेज है ये आपको बाउंड करने के लिए नहीं है, या जो रिस्ट्रिक्शंस है आपको बाउंड करने के लिए, बिकॉज none of the other two doctors, even me, we don't want that someone takes any medicine. मैं तो ये भी नहीं बोलता आयुर्वेद की दवाई भी क्यों लेनी भाई। जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, आपको याद है हम जब पढ़ाई करते तो हमारे पिताजी हमें एक व्हाइट पेपर लिखते थे, टाइम टेबल, सुबह इतने बजे उठना। मैंने तो हमेशा अपने टेबल के आगे लगा रखा था, स्टडी टेबल के आगे, इतने बजे उठना, ये पढ़ना, इस समय ये करना, ये लंच, डिसिप्लिन। सब लोग सब कुछ कहते हैं, बट मैं एक बात बोलता हूँ कि डिसिप्लिन इज द की टू गुड हेल्थ। अगर आप डिसिप्लिन में, और देखिए कभी कभी सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम वन में रह रहे हैं, मुझे भी पता है सोशल लाइफ सभी की, हमारा कभी कभी मन भी करता है, बट अगर मुझे ये पता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात समझिए, मुझे कोल्ड है मान लीजिए और मेरे सामने आइसक्रीम रखी है और मेरा मन कर रहा है खाने का, इसको आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध कहते हैं, जिसे कहते हैं मिस्टेकन इंटेलेक्ट। जब आपको पता है वो चीज आपके लिए गलत है, फिर भी देखिए मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि आप अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे कंट्रोल करिए, बट ये जरूर कहूंगा कि देखिए और सीजन भी तो है। I mean India we are very fortunate that we have 6 seasons, right? So जो विंटर्स वाला टाइम है, that time your अग्नि डाइजेशन इज वेरी गुड। आपने इस चीज को देखा होगा, गोंद के लड्डू खा लो, ये खा लो, हैवी खा लो, हमारे घरों में बनते हैं। वो कब बनते हैं? विंटर्स में। समझ में कोई नहीं देता क्यों? बोले गर्म होते हैं जी, गर्म नहीं होते, आपकी अग्नि यानी डाइजेशन पावर वीक होती है, इसलिए कहा जाता है। सो अगर पकौड़े भी खाने हैं तो विंटर्स में खा लीजिए ना, हाँ कौन मना कर रहा है।
मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि बरसात होते ही उन्हें वायरल फीवर होता है, फिर वो एलोपैथिक दवा खाते हैं और 3-4 दिन तक बुखार रहता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं। क्या आयुर्वेद में कोई घरेलू नुस्खा ऐसा है कि बरसात शुरू होने से पहले हम उसका सेवन करें कुछ दिनों तक, तो वायरल फीवर हमें बरसात में हो ही नहीं? देखिए, आपको इन्फेक्शन, वायरल फीवर वगैरह तब होगा, कब होगा? 2 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी, जैसा कि डॉक्टर शबरी और डॉक्टर किरण ने बोला कि भाई फूड बॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर लॉगिंग हो गई, तो वहां से कुछ बैक्टीरिया या वायरल ग्रोथ हुई, उसकी वजह से हुआ। एक तो ये चीज होगी, उसको ऑब्वियसली हम प्रिवेंट करें। और दूसरी चीज, हम अपनी अग्नि, हम अपनी स्ट्रेंथ, हम अपनी बॉडी को रखें ही ऑप्टिमम। नुस्खे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब जैसे सिंपली ये वर्षा ऋतु है, 1 मिनट और लूंगा, इसमें वायु बढ़ती, वात इन एयर एलिमेंट बढ़ता है, तो जैसा डॉक्टर किरण ने बोला रूमेटिज्म के केसेस ज्यादा आते हैं, है ना, कहा उन्होंने, तो उसी चीज को मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। यस, रूमेटिज्म के केस ज्यादा आते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दिस इज द एग्रीवेशन ऑफ वाता डोमिनेंस। इट मींस एयर एलिमेंट गेट्स more dominant these days. It gets prakupit, and that's why all kind of pain disorders, cervical spondylosis, lumbar, मेरे पास तो केसेस आने भी शुरू हो गए हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स के, आर्थराइटिस के, ऑल काइंड ऑफ पेन डिसऑर्डर पेशेंट्स कम। प्लस आप इस चीज को नोटिस करेंगे, अभी बहुत सारे लोग एसिडिटी शुरू हो जाएगी, लोगों को कहना कि मुझे एसिडिटी हो रही है, improper digestion, improper eating habit, all those things. वायरल फीवर भी इस समय सबसे ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आपकी जब अग्नि कम होती है तो आपकी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आपकी ओजस भी कम होता है। अगर आपको अपना ओजस बढ़ाना है तो आप अपनी अग्नि बढ़ाइए। इसका मतलब ये जो सिंपल सा नुस्खा हुआ वो ये हुआ, जिंजर यानी जिसे हम अदरक बोलते हैं, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर लीजिए हल्का सा, उसमें आधी चम्मच शहद, बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधी चम्मच शहद, और 2 से 3 चुटकी दालचीनी मिला लीजिए। इट विल बिकम अ पेस्ट। इसको आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले लीजिए। सुबह का समय कफ का होता है, वायरल डिसऑर्डर सारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कफ के डिसऑर्डर होते हैं, तो अगर सुबह लेंगे डाइजेशन फायर हैबिट बेटर होगी, एलिमिनेशन अच्छा होगा, बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट नहीं होगा, प्लस किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बहुत ही सिंपल, सुबह सुबह पानी की 1 बोतल लीजिए, सिंपल, चाहे वो मैं बैठा हूँ कांच की लीजिए, बेटर नहीं तो प्लास्टिक की भी, तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 काली मिर्च कूट के उसमें डाल दीजिए, 4 से 5 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। सो हमें कुछ गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और पूरे दिन इसी पानी को पीजिए। देखिए, क्योंकि तुलसी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज द बेस्टेस्ट एंटी माइक्रोबियल हर्ब। तुलसी हमारे घर में, काली मिर्च हमारे घर में, इसको यूज करिए, आप अपने आप को बचा पाएंगे। मॉनसून के बारे में एक बात और कही जाती है, पता नहीं ये सच्चाई है या मिथ है, कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, खास करके फिश, बरसात में फिश बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? एक्चुअली मीट और फिश के साथ प्रॉब्लम ये कि आप सोर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं। ज्यादातर जो मीट और फिश अवेलेबल है दिल्ली में, अगर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। मतलब आपको पता है कि किस तरह हमारे पोल्ट्री फार्म्स में चिकन रखे जाते हैं, हाइजीन बहुत पुअर होता है वहाँ पे, बहुत ही पुअर। क्योंकि इतना पुअर हाइजीन है, वो बर्ड्स ही इन्फेक्टेड है, वो चिकन या मटन इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। प्लांट्स में ये नहीं होता है, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट इन्फेक्ट यू। आप प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तो उससे आपको, जब तक वो बैक्टीरिया मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक ना हुआ, वो बैक्टीरिया लोड नहीं होता है। लेकिन मीट में हमेशा ही there is a load of virus and bacteria, तो पैरासाइट्स भी होते हैं कई बार, तो इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती हैं। और फिश स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली, क्योंकि अगर आपको फ्रेश फिश खानी है, देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूंगी, इट्स नॉट अबाउट अ सर्टेन रेस, बट इन दिल्ली में काफी बंगालीज रहते हैं। यस, देयर आर एरियाज जहाँ बंगालीज रहते हैं। बंगालीज जब बंगाल में रहते थे ओरिजिनली, तो वो समुद्र के पास थे, तो वहाँ फ्रेश फिश आती थी, फ्रेश कैच होता था, लोग उसको पका के खाते थे। वही लोग जब दिल्ली आ गए तो उनकी खाने की हैबिट्स तो वही रही, बिकॉज वो फिश खा के ही बड़े हुए। बट यहाँ पर वो फिश मिलती नहीं। जो यहाँ पर फिश मिलती है कुछ छोटे छोटे तालाब में ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स में, जिनमें बहुत ज्यादा मर्करी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम ऐसे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उन फिशेस में, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट उन पॉन्ड्स या लेक्स में जा रहा है और वो फिशेस को टॉक्सिक बना देता है। इसलिए अगर आप फिश या मीट खा रहे हैं तो मीट कहाँ से आ रहा है वो देखना जरूरी है, कि ऐसी जगह से ना हो जो इन्फेक्शन कॉज कर सके। और अगर आप फिश खा रहे हैं तो रिवर फिशेस खाएं, पॉन्ड्स में जो फिशेस ग्रो की जाती हैं वो नहीं खाएं, जो स्ट्रीम में, जो फ्लोइंग वाटर में फिश ग्रो होती है वो वाली फिश खा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हेल्थनामा में हम फिर मिलेंगे कुछ नए डॉक्टरों के साथ। नमस्कार।
Welcome back. This episode of Health for All is live on YouTube and Facebook. We now have the session intro video. Welcome back. We move on to a very, very special segment. July 1 was Doctors' Day. National Doctors' Day was first observed on 1st of July 1991 in honor of Dr. Bidhan Chandra Roy to pay tribute to his contributions to the health domain. July 1 happens to be his death and birth anniversary that coincides on the same day. Dr. Roy was a renowned physician, an educationist, a freedom fighter, a social worker, and a politician. He also served West Bengal for 14 years as Chief Minister. He was awarded the Bharat Ratna, the highest Indian civil award, on February 4, 1961. He dedicated his life for the people and treated many and inspired millions. Furthermore, he was also Mahatma Gandhi's personal physician. As a tribute to Dr. Roy, a panel of senior doctors will be deliberating on family doctors in the forefront. And we have with us Dr. Mohit Gupta, Professor Cardiology, GB Pant Hospital, Dr. Amitabh Banerjee, Professor and Head Department of Community Medicine, D.Y. Patil Medical College, Center, Pune, Dr. Mahesh Chauhan, Founder and Head Dental Surgeon, Mother Dental Implant Clinic, Professor Chandrakant S. Pandav, President ICCIDD, Dr. Sonia Rawat, Director, Department of Preventive Health and Wellness, Sir Gangaram Hospital, New Delhi, Dr. Rajesh Kesri, Consultant Diabetologist and Director, Total Care Control and Membership Governing Council, RSSDI, Delhi, Dr. Rajesh Jain, Project Manager, Diabetes Prevention Control Project, Dr. Sandeep Khatiyar, Pulmonologist, Apollo Spectra, Kanpur, and Dr. Sadiq Azam, Consultant Cardiology, KIMS Hospital, Hyderabad. A very, very renowned panel of doctors that we have here with us. Over to you, Kishore, for the first round of questions. Thank you, sir. जैसा कि मिस्टर शंकर ने बताया कि डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमारा ये एपिसोड डॉक्टरों को डेडिकेटेड है, तो मैं सबसे पहले
इस पैनल में शामिल सभी डॉक्टरों को प्रणाम करता हूं, और जो डॉक्टर हमारे साथ अभी नहीं है, पूरी दुनिया में सक्रिय है, उनको भी प्रणाम करता हूं। और मरीजों की सेवा करते हुए जिन डॉक्टरों ने अपने प्राण त्याग दिए, खास करके कोविड के समय में, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मोहित गुप्ता से है। एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि ये बीमारी मरीजों को ज्यादा समय नहीं देता। इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं आप? सर अनम्यूट कर लीजिए। Many thanks for this wonderful invitation. लाइफ डेफिनेटली हर प्रकार के चैलेंजेस से फुलफिल्ड होती है, लेकिन उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना ये एक अच्छे डॉक्टर का काम है। एंड ऐसे समय पर जब ये जो हार्ट की बीमारियां, ये एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है, और स्पेशली जो हार्ट अटैक है, 25% पेशेंट्स आर अकरिंग बिटवीन 18 to 35 ईयर्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन इज द टूल, और इसको मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जांपल से स्पष्ट करता हूँ। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी एंड ऑल ऑफ अस, द जॉब दैट वी आर डूइंग, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो किसी झाड़ू पोछे वाले से अच्छा नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज कि बीमारी बढ़ती चली जा रही है, और हम उसका इलाज सर्जरी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा, दवाई के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ध्यान किसी के मन में नहीं आता कि यदि हम नलके को बंद कर देंगे तो जमीन गंदी होनी बंद हो जाएगी। वो नलके को बंद करना, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर लेना, उसको इनकलकेट करना, इसको मास मीडिया के द्वारा, ऐसे माध्यमों के द्वारा, लोगों के द्वारा इसको पब्लिसाइज करना, यही एक बहुत बड़ा जो टूल है, जो चैलेंज है, जिसको आज हमें साकार करना है। इस मंच के माध्यम से मैं आज सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हार्ट की बीमारी का मुख्य कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और ये सब बीमारियां, लिपिड की बीमारियां हैं। आज स्लीप को आज HNA ऐड किया, ये सब है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है तनाव और साइको सोशल स्ट्रेस, जो आज हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रकोप का रूप ले चुका है। तो इसलिए जब भी हम किसी मरीज का इलाज करते हैं, कोई मरीज हमारे संपर्क में आता है, तो उनको 3 टिप्स देना बहुत आवश्यक है, और ये 3 टिप्स उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ मानी गई है। ये है डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। जैसे हम शरीर को स्वस्थ और अच्छी डाइट खिलाते हैं, जिसको स्मार्ट हार्ट डाइट कहते हैं, इसी प्रकार हर व्यक्ति को, हर मरीज को, या हर व्यक्ति जो कि मरीज नहीं भी है, नॉर्मल अपनी लाइफ लीड भी कर रहा है, उसको भी अच्छे सकारात्मक और पॉजिटिव संकल्प अपने मन को जरूर देने चाहिए, क्योंकि अवर लाइफ इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर थॉट्स। जिस प्रकार की चीज हम अपने मन में डालेंगे, वही हमारी बाहर निकल कर आएगी। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। अगर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप से मैं आपको एक लाइन में एक्सरसाइज की समरी देना चाहूं तो वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 30 से 35 मिनट रोज वॉक नहीं करता है या व्यायाम नहीं करता, वो अपनी उम्र में डेली 30 से 35 मिनट कम करता चला जाता है। दिस इज हाउ साइंस वर्क। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया नेशनल साइंस फाउंडेशन 2005 की बहुत सुंदर स्टडी ने ये शो किया है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज वेट से कोई संबंध नहीं रखती, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका बिल्टो आपको जरूर करनी है। इसी के साथ साथ जब आप शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, आपको अपने मन को भी श्रेष्ठ और पावरफुल एक्सरसाइज आज इस माध्यम से जरूर समझिए, यह आवश्यक है। आज कोई भी चीज जो लगातार काम करती है, वो थक जाती है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर, वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार आज हमारा सबका मन भी, भौतिकता होते हुए भी हमारा मन थक चुका है। मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि हमने अपने जीवन में अभूतपूर्व सामान इकट्ठा किया है, लेकिन उस सामान के साथ साथ आज हम सब लोग अपने आप से पूछें कि क्या हमने उतना ही सुकून भी अपने जीवन में इकट्ठा किया है। हम अपने जीवन के अंदर भागते चले जा रहे हैं, लेकिन उस सामान को इकट्ठा करते करते कहीं ना कहीं जब सुकून चला जाता है, तो ये बीमारियों के ऐसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हमको डिस्कस करना पड़ता है। दोस्तों, हम जितनी भी बात कर ले, लेकिन जब तक मन में सुकून, मन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, कोई भी चीज हमारे जीवन में परिवर्तित नहीं होने वाली है, चाहे कितना भी एडवांसमेंट हो जाए। तो अपने मन को भी हल्का और लाइट रहना सिखाइए। और लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आराम, यानी रेस्ट। आज लोग कहते हैं कि सोना बहुत आवश्यक है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक यही अनुरोध है कि जब आपका शरीर सोता है, व्हेन यू गिव रेस्ट टू योर बॉडी, क्या उस समय आप अपने मन को भी सुला पाते हैं? दोस्तों, लगातार चलता हुआ मन
दौड़ता हुआ मन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को थका देता है। इसलिए मेडिटेशन और योग की प्रक्रिया, जो युज जो शब्द जुड़ने से बना है, मन और आत्मा और शरीर यानी बॉडी और माइंड के बीच में जो समन्वयता आती है, जो लय आता है, जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारे जीवन के अंदर हमको आराम देता है। दैट इज वाई व्यक्ति कभी भी शरीर से नहीं थकता, व्यक्ति अपने मन से थकता है। तो इसलिए इन बीमारियों को जीतने के लिए केवल स्थूल माध्यम, केवल अपने जीवन के अंदर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई, वो लाइफस्टाइल केवल शरीर का लाइफस्टाइल नहीं है दोस्तों, वो लाइफस्टाइल हमारी लाइफ, हमारी सोचने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, ये हमारी लाइफस्टाइल को गवर्न करता है। तभी आज आप देखेंगे कि इतने हेल्दी यंग नवयुवक हैं XYZ जिनकी सडन डेथ हो जाती है। मेरे पास कितने ही लोग मैसेज आते हैं, कितने ही लोग चैनल वाले आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका कारण केवल यही है कि शरीर को स्वास्थ्य देते हुए, उसको एक्सरसाइज देते हुए हमने अपने मन को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। इसलिए आज साइंस और हमारे अपने यहाँ जो शोध किए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जेनेटिक स्टडीज के द्वारा, उसके अंदर हमने दिखाया कि इन बच्चों की, इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ, ये पब्लिश स्टडी जो हमने की है, टेलोमेयर लेंथ जिसमें हमने स्टडी की, रिवीलिंग स्टडी थी कि जो हार्ट अटैक के यंग बच्चे थे जिनकी उम्र 18 से 30 साल थी, जब हमने उनकी जीन्स को स्टडी किया, उनके टेलोमेयर लेंथ को स्टडी किया, तो उनके रिजल्ट्स आए कि उनकी शारीरिक उम्र 18 से 30 साल थी, उनकी बायोलॉजिक और जेनेटिक एज 60 to 85 ईयर्स थी दोस्तों। और जब हमने कारण देखा तो सब कारणों को हटाते हुए उसके अंदर साइको सोशल स्ट्रेस नंबर 1 कारण उभर कर आया। और साइको सोशल स्ट्रेस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, ये हमारी टेलोमेरेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है और लेंथ को भी, टेलोमेयर लेंथ को भी कम करता चला जाता है और बीमारी मैनिफेस्ट करती है। तो आज से बढ़िया कोई भी समय नहीं है कि अगर आज हमको इन बीमारियों को जीतना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आर नॉट गोइंग टू गिव अस न्यू मॉड्यूल्स। तो उनको परिवर्तन करने के लिए बहुत आवश्यक है अपने संकल्पों को, अपने जीवन को, अपने सोच को परिवर्तित करना। दोस्तों सदा ध्यान रखिएगा कि यू आर द मास्टर ऑफ योर अनस्पोकन वर्ड्स एंड स्लेव ऑफ योर स्पोकन वर्ड्स। माइंड इज अ ग्रेट सर्वेंट बट इट इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस मास्टर। आज हमारा मन हमको चला रहा है बिकॉज वी हैव लेट इट लूज एंड अनकंट्रोलेबल, और उस अनकंट्रोलेबल के कारण आज हम भौतिकता के अंदर फंस गए हैं। हाई टेक हमने अपनी लाइफ बनाई है लेकिन जीवन से कहीं ना कहीं हमने हाई टच छोड़ दिया है। अंत लाइन बंद करते हुए मैं आपको केवल एक ही संदेश दूंगा कि एक बारी एक बहुत सुंदर एक कुम्हार ने एक चिलम बनाई और चिलम बनाकर उसे डेकोरेट करके उसने रख दिया और थोड़ी देर बाद तोड़ दिया। तो उसने मिट्टी ने उससे पूछा कि कुम्हार तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, तूने इसे तोड़ क्यों दिया? ये तो इतनी सुंदर रचना थी। उसने कहा मेरा मन बदल गया, मैं चिलम नहीं अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी उससे मुस्कुराते हुए बोली कि कुम्हार तेरा तो मन बदला, मेरी किस्मत बदल गई। तो कुम्हार ने बोला तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तो मिट्टी ने कहा कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, और अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। दोस्तों, आवर लाइफ इज अ कंप्लीट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाउ वी थिंक, व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी लिव आवर लाइफ, और यही परिवर्तन का नियम है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल तरीके से हेल्थ की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। हालांकि आपने प्रिवेंशन पर जोर दिया लेकिन लोगों का माइंडसेट ये है कि जब होगा तब देखा जाएगा। लोग प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपने बताया लोगों, ज्यादातर लोगों के पास ये बात पहुंचे। मेरा अगला सवाल डॉक्टर महेश चौहान से है। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान लगभग 2 साल डेंटल हेल्थ केयर बुरी तरह प्रभावित रहा। ज्यादातर क्लिनिक बंद रहे, उसके बाद भी उस पर प्रभाव रहा। तो आप ओवरऑल डेंटल हेल्थ केयर पर क्या प्रभाव पड़ा? जी, अच्छा सवाल आपने पूछा है एंड आई थैंक हिल फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वेबिनार। मेरे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही जो सोच के ऊपर बोली कि हमें अपनी सोच भी सकारात्मक रखनी है। इसीलिए जो लोग ये कोविड लॉकडाउन में अपना ओवरऑल ध्यान रखते रहे उनको जो है डेंटल बीमारियां या डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम हुई, और जो लोग ये सोचते रहे कि हाय हाय ये सब बंद है, हाय हाय ये सब नेगेटिव है, उनके जो है डेंटल केयर्स की जो है वो निग्लेक्टेड रहा, और बहुत कम या कोई भी क्लिनिक ना ओपन के कारण या फियर के कारण उनके जो है जो कैविटीज थी या गम्स की प्रॉब्लम थी वो सब बढ़ती गई। तो जैसे 35 मिनट्स एक्सरसाइज का डॉक्टर साहब ने बताया,
ऐसे ही 35 मिनट्स नहीं, मैं तो केवल 3.5 मिनट्स की गुजारिश करता हूँ सभी से। तो डेंटल केयर पे अगर जो इंसान अपने 24 घंटे में से 3.5 मिनट्स या 4 मिनट्स निकाल दे तो फिर उनकी डेंटल केयर काफी अच्छी संभल सकती है। ऑफ कोर्स डाइट पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है चिपकने वाली चीजें या मीठी चीजें या ऐसा ही खा के सो जाए तो कुल्ला वगैरह ना करें, ब्रश ना करें, ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दें। तो डेंटल केयर में इसेंशियली ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डेंटल फ्लॉस जो है इसका अगर जो ध्यान रख लें तो फिर जो है ज्यादा खराबी आने की नौबत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो या तो पेन हुआ तो पेन किलर के सहारे चलाते गए, या फिर उनको हुआ तो हम कोई टेलीफोनिक की प्रिस्क्रिप्शन उनको बताते गए। जो इंटरवेंशन प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ी वो शायद उनको मुहैया नहीं हुआ। बट ओवरऑल लगभग सभी ने इस पीरियड को किसी न किसी तरह निकाल ही लिया, और बाद में जब डेंटल केयर ओपन हुई तो फिर उसकी जो है टेकन केयर ऑफ वो चीज एस्पेक्ट हो गया। आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब डबल चैलेंज रहा, और न सिर्फ कोविड के लॉकडाउन के दौरान, कोविड के बाद भी जब फिर से दोबारा फैलने लगा, ओमिक्रॉन आया तब भी, क्योंकि एक आपका है कि पेशेंट को देखना, दूसरा है खुद को इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि पेशेंट मास्क लगा के तो आप उनका चेकअप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में समाधान कैसे निकाला? जी, डेंटिस्ट्री में पहले से ही जो ध्यान रखा गया था, एक बहुत पुरानी 70s की एक अमेरिकन साइंटिस्ट की वीडियो थी, इफ सलाइवा वाज रेड। तो ये वीडियो में उन्होंने अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन में ये दर्शाया गया कि अगर जो सलाइवा जो कि कलरलेस और स्मेललेस होता है वैसे वो रेड होता तो क्या होता। तो इसके जरिए डेंटिस्ट को, डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सिखाया गया कि कैसे आप यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखे जाए आपके पेशेंट के लिए, आपके अगले पेशेंट के लिए और अपने खुद के लिए। तो इसमें यह दर्शाया गया कि अगर जो सलाइवा रेड था तो हम कहाँ वो रेड मार्क देखते एक डेंटल ट्रीटमेंट पूरा होता तो उसमें पाया गया कि डेंटिस्ट को बहुत अवेयर रहना चाहिए कि कहाँ उसके हाथ छू रहे हैं, कहाँ हम इक्विपमेंट को छू रहे हैं, और कैसे फॉर एग्जांपल हम डेंटल स्केलिंग प्रोसीजर्स या डेंटल ड्रिलिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो कैसे उसका एरोसोल उड़ रहा है। बट डेंटिस्ट्री में पहले से ही इस चीज के प्रति जागरूकता डेंटिस्टों में जगाई गई है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस माने जाए। जैसे कोविड तो अभी आया, उससे पहले भी खतरनाक बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है, HIV है और दूसरी ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब है ही। तो हर एक पेशेंट को जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको भी इन्फेक्टेड मान के चले और हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखें, ऑटोक्लेव के और नो टच के, डिस्पोजेबल आइटम्स के, ये सब। दूसरा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है कंपेयर टू सम अदर डिजीज, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में जैसे पेशेंट को पहले जो है पोविडीन आयोडीन का कुल्ला कराया जाए, हाई वैक्स सक्शन यूज किए जाए, ऑटोक्लेविंग का प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए, क्लिनिक का वेंटिलेशन रखा जाए, और डेंटिस्ट और डेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो स्टाफ वगैरह है वो सब N90 मास्क पहने, N95 मास्क पहने, ये सब ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीजों का जो है एक्स्ट्रा चीज ये फोकस में आई, और ये हमने देखा कि जो डेंटिस्ट इसके प्रति जागरूक कम थे वो भी ज्यादा जागरूक हो गए, और ओवरऑल जो डेंटल केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें सुधार आया। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजेश केसरी, एक फैमिली डॉक्टर के रूप में डायबिटोलॉजिस्ट की भूमिका बड़ी अहम होती है। उनके डायबिटीज को नियंत्रण में भी रखना है और कोविड जैसे इन्फेक्शन से भी बचाना है। क्या अनुभव रहा आपका? अनम्यूट कर ले सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी फैमिली डॉक्टर की भूमिका, खासतौर पे आजकल के दौर में जब बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जब ऐसा समय भी आया, कोविड का दौर आया, जब मरीज घर से बाहर नहीं निकल सकते और ज्यादातर इलाज इन 2 सालों में, ये करीब 1.5 सालों में टेली कंसल्टेशन में हुआ, तो इस दौर में फैमिली डॉक्टर की भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम रही है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर वो डॉक्टर है जो मरीज के पूरे संपर्क में रहा है, सालों से मरीज की बीमारियों को जानता है। और फिजिशियन की भूमिका
केवल कोविड के दौरान ही नहीं, हर समय फिजिशियन की भूमिका बहुत ही अहम होती है। ये सब हमको समझना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों का जो है, अगर शुरुआत में इलाज हो जाए, सही और उचित इलाज हो जाए, तो बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सही इलाज हो जाता है, उनका आउटकम अच्छा होता है, और जो मरीजों को नुकसान होता है, जो आहत होती है, या जो उनका खर्चा भी होता है, जो कॉस्ट होती हैं, अगर सही समय पे बीमारी को पकड़ लिया जाए, उसका इलाज करना शुरू कर दिया जाए, और अगर ये इलाज फिजिशियन खुद नहीं भी करते तो कम से कम फिजिशियन का हम बोलते हैं एक रेफरिंग इंस्टीट्यूशन, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं मरीजों को कि अब ये स्थिति आ गई है, ये बीमारी है, तो आगे हमें ये करना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो फिजिशियन की भूमिका है, अभी जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस है, खासतौर पर बड़े शहरों में, ये कुछ कम होती जा रही है, और इसका सभी लोगों को, मरीज को, सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है। आजकल देखिए, लोगों का पेट दर्द भी होता है तो वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर होल बॉडी चेकअप कराते हैं, और पेट दर्द होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मान लीजिए कोई भी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जैसे हमारे अभी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों के पास इतना पेशेंट बर्डन, इतना लोड होता है कि जब छोटी छोटी चीजें जो घर बैठे आराम से ठीक हो जाती हैं, उसके लिए भी जब पेशेंट ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करते हैं। तो ये संक्षिप्त में जो है फिजिशियंस की भूमिका है सोसाइटी में। फैमिली फिजिशियन का इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो बरकरार रहे, जहाँ एक फिजिशियन है जिसको मरीज की बीमारियां पता है, मरीज की फैमिली हिस्ट्री पता है। जैसे आपने डायबिटीज की बात की, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन सब में एक खास ये बात है कि इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं, और एक बहुत अहम रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज, ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। अब जिस डायबिटिक मरीज के परिवार में माता पिता या भाई बहन या किसी ब्लड रिलेशन को किडनी की कॉम्प्लिकेशन हुई है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उनको वो कॉम्प्लिकेशन होने की आशंका ज्यादा है। ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो फैमिली फिजिशियन क्योंकि पूरे परिवार का इलाज करते आ रहे हैं, उनको ये बात पहले से पता होती है कि ऐसे मरीज को क्या दिक्कत ज्यादा हो सकती है, तो उस पर वो ध्यान देते हैं, उसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो ये फैमिली फिजिशियन का जो रोल है बहुत अहम है, हमें इसको बरकरार रखना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बात आई डायबिटीज की, और डायबिटीज और कोविड से रिलेटेड जो दिक्कतें हुई हैं और कैसे फैमिली फिजिशियन ने संभाला है। जैसे शुरुआत में बात हुई और सभी डॉक्टर्स ने बोला, प्रिवेंशन इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीमारी का इलाज हम नहीं कर सकते, हमें ये पता है, लेकिन बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं। और कोविड ऐसा समय था जिसने हम सबको सिखाया, हम सबको समझाया। अभी तक हम जानते तो थे कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डायबिटीज के ज्यादातर मरीज हार्ट अटैक से मरते हैं, या उनको स्ट्रोक होती हैं, या और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, आंखों की, किडनी की, पाँव की, नसों की। लेकिन एक ये बात हमें समझ में अब आई है इन 1-1.5 सालों में कि डायबिटीज, शुगर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहती तो जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड बीमारी आई है, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल ठीक थे। जैसे हमने देखा कि जिन लोगों की शुगर, डायबिटीज अनकंट्रोल थी, ऐसे लोगों का आईसीयू में एडमिशन ज्यादा हुआ, और जब आईसीयू में एडमिशन ऐसे लोगों का हुआ कोविड की वजह से, तो वो ज्यादा लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, और अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस और डेथ ऐसे लोगों में ज्यादा हुई। तो क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, इनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और अब हमें ध्यान देना चाहिए इनके प्रिवेंशन पे, इनके प्राइमरी प्रिवेंशन पे। मतलब ये कि अगर आप बड़े हो गए हैं तो अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए, अपना वजन कम रखिए कि ये बीमारी आपको ना हो, क्योंकि डायबिटीज की एक बहुत बड़ी और सबसे बड़ी वजह टाइप 2 डायबिटीज की वो है एक्सेस वेट और एक्सेस फैट, जो हमारे पेट में चर्बी जो जमा होती है। तो केवल अपना वजन कम रख के हम डायबिटीज से बच सकते हैं,
और जितनी भी डायबिटीज की आने वाली कॉम्प्लिकेशन है उन सब से बच सकते हैं। तो अगर मैं कोई एक एस्पेक्ट कहूंगा कि जो हम सबको ध्यान देना चाहिए अपने लिए, वो है वजन, वो है हमारा मोटापा, कि हमारा पेट ना निकला हो, हमारा वजन ज्यादा ना हो। हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 23 या उससे कम हो। तो संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी तरह से अपना वजन कम रखते हैं, और उसको कम रखने का एकमात्र ये तरीका है कि हमें अपने खाने पे ध्यान देना है और हमें फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखना है। इसके बारे में पहले भी डॉक्टर ने बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन डायबिटीज से बचने का तरीका और डायबिटीज को कंट्रोल करने का तरीका भी यही है कि आप अपने वजन पे ध्यान दें, कि आपका पेट ना निकला हो और शरीर में चर्बी कम हो। डॉक्टर साहब, एक हम लोग डॉक्टर्स डे पे भी बात कर रहे थे, तो एक अलग हटकर सवाल है। एक रिपोर्ट भी आई हुई है कि डॉक्टर्स को सेल्फलेस गॉड माना जाता है। ये एक मिथ है जिसे अर्बन एलिट और फिल्मों ने क्रिएट किया है। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? डॉक्टर्स को डॉक्टर गॉड का रूप है, सेल्फलेस गॉड है। ये एक मिथ है जिसे अर्बन एलिट और सिनेमा फिल्मों ने क्रिएट किया है। देखिए, ये तो हर व्यक्ति का देखने का तरीका है। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स आल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही होते हैं, और डॉक्टर्स की प्रोफेशनल नॉलेज है जो जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स के अंदर डेडिकेशन होता है, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने अपनी जो जिंदगी देखी है, अपनी जब से मैंने पढ़ाई की है मेडिसिन में, जो हमने अपने प्रोफेसर्स देखे हैं, जो हमने अपने टीचर्स देखे हैं, जो हमने सीनियर्स देखे हैं अपने थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई प्रैक्टिस, और जिन भी अस्पतालों में मैंने काम किया है, जरूर ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको मैं तो भगवान मानता हूँ। मैं यही नहीं कह रहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सचमुच में डॉक्टर्स के अंदर ऐसी डेडिकेशन होती है जो मैंने और प्रोफेशंस में दूसरों के लिए नहीं देखी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँ कि डॉक्टर्स जो करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। डॉक्टर मरीज को देखता है, मरीज का इलाज करता है, वो मरीज के फायदे के लिए करता है। वो हर हालत में चाहता है, हर तरह से चाहता है कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो। और एक बात का ध्यान रखिए, डॉक्टर्स केवल ये नहीं चाहते, ये नहीं कोशिश करते कि मरीज ठीक हो, डॉक्टर्स ये भी चाहते हैं कि मरीज कम से कम नुकसान उठा के, कम से कम तकलीफ सह के और कम से कम खर्च करके ठीक हो। ये बहुत सारी चीजें जो हमारे डॉक्टर्स के मेडिसिन प्रोफेशन की जो बातें हैं लोगों को समझ में नहीं आती। अक्सर लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ, कि डॉक्टर साहब आपकी दुकान पे आए, तो मैं कहता हूँ कि ये क्लिनिक, ये दुकान नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। ये समझना कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि आप ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, आपका कम से कम खर्च हो, आप कम से कम दवाई लें। तो ये प्रोफेशन है आपके हित के लिए, आपका फायदा करने के लिए। ये प्रोफेशन इसलिए नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि डॉक्टर इससे मुनाफा कमाएं और इससे प्रॉफिट बनाएं। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है, एक ये प्रॉफिट मेकिंग प्रोफेशन नहीं है। शायद इसलिए लोगों में ये भावना थी जिसके बारे में आपने चर्चा की। और जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो हम परिवार में सचमुच में डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर तो थे, उनको भगवान मानते हैं। अभी भी जो हमारे परिवार में और डॉक्टर्स आते हैं, जो हमारे माता पिता का इलाज भी करते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। तो हमारे फैमिली में एक ये ट्रेडिशन है, ये माना जाता है। और मैं सचमुच में कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे सीनियर्स हैं, जिनको मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जिनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया है। और मैं सही मायने में ये मानता हूँ कि कहना चाहूँगा कि जी हाँ, डॉक्टर्स भगवान का काम करने की कोशिश करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, अपनी जी जान दे देते हैं मरीज को ठीक करने में। ऐसे प्रोफेशन बहुत कम होंगे जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट को न देखते हुए भी मरीज की मदद ये किसी थैंक यू डॉक्टर साहब की जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संदीप कटियार, डॉक्टर संदीप कटियार जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। एक पल्मोनोलॉजिस्ट के रूप में आपको और आपका परिवार हमेशा इन्फेक्शन के खतरे के दायरे में रहता है, कोविड और नो कोविड का हमेशा रहता है, और आप तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को भी
देखते हैं। तो कैसे बचाव करते हैं, खुद का भी परिवार का भी कैसे झेलते हैं? बहुत ही मुश्किल चीज होती है खुद का और परिवार का इन बीमारियों के बीच में बचाव कर पाना। बेस्ट पार्ट जो है प्रिवेंशन में ध्यान देते हैं कि बीमारी कम से कम फैले। क्लिनिक में हम लोग अब कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट मास्क पहन के आए और खुद भी हम लोग मास्क पहन के रहते हैं। पेशेंट को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि वो मास्क नहीं उतारे। कई जो पेशेंट होते हैं जो कि सिर्फ अपनी जो है चेहरे की यहाँ पे मास्क लगाए रहते हैं, अपना मुंह कवर करते हैं, लेकिन उनकी नाक खुली रहती है। तो उनको ये चीज समझाना कि उनको पूरा मास्क लगाना है, पूरा फेस कवर होना है, खांसना कम से कम है। इन चीजों से बीमारी का फैलना हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, राउंड्स करते हैं, कपड़े सब हम लोग के गंदे होते हैं। हम लोग फोमाइट्स होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस जो कि हमारे कपड़ों के ऊपर बैठा होता है। कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल से जब भी वापस आए अपने कपड़े अलग रखें। एक नीचे अलग वॉशरूम बनाया, बाथरूम बनाए हुए हैं जिसमें ये अलग से हम लोग जाके पहले शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर में घुसते हैं। उसके बाद इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हम लोग को इन्फेक्शन हो जाए और कोई भी सिम्टम आए तो अपने को सेल्फ आइसोलेट करें, ना कि फैमिली साथ रहते रहें, बैठे रहें और सबको इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को करने की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी हम लोग जब वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सबको फैलने से बचा पाए। डॉक्टर साहब, आप चूंकि टीवी प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम से, तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है और आपसे भी पूछा गया होगा पहले, तो शायद मैंने भी पूछा है कि कोविड-19 ने टीबी प्रोग्राम को तो बहुत प्रभावित किया है, इस पर कोई शक नहीं। क्या हमारा 2025 का लक्ष्य है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ टीबी इन इंडिया, ये संभव है? ये इस तरीके के प्रोग्राम थे जो कि आप एक प्रोग्राम बनाते हो 2025 तक, आप ट्राई करते हो वहां तक पहुंचने की, कि आप वहां तक नहीं, कम से कम थोड़ा सा उसके नीचे हिट करने की कोशिश कर पाओगे। लेकिन कोविड-19 के आने की वजह से दवाइयां पर ही छूट गई, कई पेशेंट आ नहीं पाए, ट्रैवलिंग नहीं रही, दवाइयां नहीं मिली, और उसके साथ कोविड भी हुआ जिसमें स्टेरॉइड चले, पेशेंट्स को अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम आई और उनकी टीबी बीमारी बढ़ी। हम लोगों ने इस बीच जितने पेशेंट देखे हैं सब एक्सटेंसिव डिजीज के देखे हैं। जो एक 2 महीने पे पेशेंट आ जाता था जो खांसी करता हुआ शुरुआती बीमारी लेता हुआ, वो चीज आनी कम हो गई। और इसका बहुत आगे चल के प्रकोप आएगा, क्योंकि पेशेंट के एक बार फेफड़ा डैमेज हो जाता है टीबी से, अगर अच्छी मात्रा में डैमेज हुआ तो उसको बाद में सांस की परेशानी, खांसी में बार बार खून आना, अलग अलग इन्फेक्शन बार बार होना, मामूली इन्फेक्शन से परेशान होना, सांस फूलना, ये सब और ज्यादा दिक्कत देता है उन्हें। तो 2025 का लक्ष्य तो नहीं पास आता वो दिख रहा है मुझे। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओवर टू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. Is Professor Mohit Gupta there available? Are you available now? Professor Gupta? Well, I think he's not available now, but I just wanted to ask a question for him. And I will now move on to Dr. Amitabh Banerjee. Dr. Amitabh, wonderful seeing you here. I always say you're sometimes controversial. I will not repeat that. I will expect the fast bowling and again. Every time I'm facing the same bowler. No, but I will say that your comments are as sharp and incisive as a surgeon's knife. So that remains there. So I will ask you a question from what was left off from what Kishore asked about doctors being gods. That was a concept which was there in the 80s, which where people who didn't have access to medicine and did have access to gods finally had access to doctors. So that was the first line of the god that they met, and they had this god in front of them. But now, and it was also used for covering up some of the controversies, like the medical college issue, the Consumer Protection Act, the kidney issue. All these things were used, and then you had a lot of films saying that this is Bhagavan in white coat. But then what happened now is that this family doctor is all gone, and then you have commercial establishments coming. So the general concept now is that if you go to a doctor, you will not only lose your patients, but also lose your money.
And so there is a general concept that some of the institutions, I would not say all, some of the institutions are actually exploiting the patients. So what's your view? Thank you, Mr. Sankar, and I should thank Mr. Kishore for asking that question. I was so excited. Coincidentally, I was just reading that feature. I mean, it's telepathic. And yes, the yes. paper is out. I have got the answer here. So yes. Everything is allowed in this session. This is by Kiran Kumar. So this is research done by, actually what it just struck me about 30 years back in time. I'll just, very interesting anecdote. Actually, what I have experienced over the years, as I think Dr. Rajesh also got quite worked up when he was asked that whether doctors are gods and there is a alternative view. What I think, there are cultural barriers. Among the urban, among the educated, among the medical college, we move in a particular cultural environment and we think and we do our best. There is no doubt that doctors work 24/7, they put their life at risk. But across the cultural barrier, this is not conveyed to 70% of our people coming from different regions, particularly the rural areas. They have got a different ear, and when they come to the doctor, sometimes the doctor is very busy, as brought out by Dr. Mohit also, that they do not have time to educate the patients, where the role of the family doctor comes. And that is a species which is gradually disappearing because everybody is going for specialization. So we require to improve the institution of the family doctor. We have to think. And in fact, I was just a plain MBBS 30, 40 years back when I had joined the army as a young doctor. And that time we used to practice as a family doctor only, 3-4 years. And I thought I am communicating very well to my patients, which were the troops. We had a OPD. As a general duty medical officer, I used to run my OPD in the morning. I had an office as a separate OPD away about 2 kilometers from the military hospital. And I was a young doctor and I used to finish my OPD very fast and go to the military hospital to practice anesthesia and other things which I was interested in, the OT and holding the knife, as you said. So I used to think that is the actual technological medicine. So I used to hurry up my OPD and go to the hospital. That was 34, somewhere in the northeast in Nagaland. So one day I was walking in the evening. In the evening, I saw a long queue and I was seeing that I am treating my patients very well. In the OPD, I used to prescribe the correct medicine, give them whatever, and hand it over to my nursing assistant, medical assistant. So one day, and it was a South Indian Madras regiment. So there was a language barrier also. So I used to talk in English, Hindi, they never used to understand. They used to talk something I never used to understand. But I used to think I am doing the correct practice. I thought I am God to them. So one day evening, I was taking an evening walk and suddenly I see a long queue in front of my office. I was in civil dress. Nobody recognized me. So I walked up to the back of the queue. I said, what's happening here? He says, the doctor is inside. He is seeing patients in the evening. I said, okay, but the doctor comes in the morning. He says, no, the one who comes in the morning is no good. The evening one is very good. I was this was curiosity. I was surprised कि यार evening में कोई बड़ा super specialist आया होगा. So I just peeped to the window and peeped in. And I saw my nursing assistant. He is explaining in the language. He was from South India. He was taking my prescription in the morning and he was explaining to the patients about lifestyle, about rest, about food and exercise, all those things. Then I realized that even MBBS knowledge is too much. I think is not enough to communicate to people from a different cultural background. So that was an eye-opener to me. That is what we are lacking in the present day medical education because we are going too much science and mechanical models. So doctors think they are doing their best, but a little software adjustment is required. I mean, there is no interface between the software of the patient who is coming from a different cultural background and the doctor who is highly trained. So this some little tweaking is required so that there is an interface. The doctor particularly trained in even in the formative years, something about social medicine, about humanities. And there is a recent change in the medical curriculum. I don't know, with the too many students are there, like in community medicine, from first year, the student has to adopt few families. From first year to family years, go to the community, go to the rural area, adopt some families,
and see the environment, see the lifestyle, see and accordingly counsel the families. So this is very good in theory and concept, but giving the huge syllabus, I think how well it is translated. So these are some of the gaps we have to, as a doctor, I think all specialists, and as a family doctor, we are not having adequate family practice. So the specialist, it's not fair to the specialist also. They don't have time to give this, such good advice can be given to each and every patient. So they could train some social workers or something to give them advice. Thank you. Speaking of communication gap, I have one question to Dr. Mohit Gupta. Dr. Mohit, are you available now? We had asked Dr. Mohit to come online. I think he's slightly busy, but I will now move on to Dr. Rajesh Jain. Dr. Rajesh Jain, welcome to the show. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Dr. Rajesh Jain, the earlier concept of family doctor was that the family doctor knew everyone in the family and he was part of the family. He knew the father, the wife, the mother, the daughters, and their marriageable age, their education. It was such a very personal bond that he built up with the patients. As a result of which, they had a lot of confidence in this particular doctor. Now, has this concept vanished, and do we need to bring it back? If so, how? Thank you, Mr. Shankar, and thank you very much for this wonderful session. Thanks for the Heal Foundation for this interesting debate on the family doctor. Yes, I would say yes, we are losing the touch with our patients because the concept of family physician is a little bit going at the back seat, and we need to undo it actually. Okay, so we have to just, Dr. Kesri also emphasized this fact that the family physician previously were very active with the patient. They used to name the whole family's name, and they used to know what are the particular disease prevalent in that particular family. And we have a bondage, emotional bondage, that is very, very important. And we have to revive it, and we have to correct this imbalance actually between specialization and the MBBS doctor. And this is a worldwide phenomena that specialization is getting more attention. Okay, कि हमारा MBBS डॉक्टर जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वो हमेशा सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहते हैं. ओके, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सब डॉक्टर के लिए कि सबसे पहले जानना कि दे आर MBBS फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, एंड 5 to 7 years if it is practiced in a community like प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो वो बेसिकली हमारा बेस बन जाता है. ओके, और जैसा कि प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया कि ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन ए रिमोट एरिया where he come to know about the patients closely. तो वो कॉन्सेप्ट हमें रिवाइव करना पड़ेगा. और जैसा कि हम खुद जानते हैं कि हमें भी किसी ने ट्रीट किया था. ओके, और हमारा भी कोई गोल्ड स्टैंडर्ड डॉक्टर था अपनी लाइफ में, और हम एक और या दो ही डॉक्टरों को दिखाते थे पूरी फैमिली, और उससे हमें बहुत ज़्यादा जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. ओके, और जैसा कि अब क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये प्रूव हो चुका है कि 70% जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है. ओके, यदि हम पेशेंट को रीअश्योर कर देते हैं कि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या डिस्लिपिडीमिया बहुत ज़्यादा है और वेट प्रॉब्लम है, तो यदि हम एश्योर कर देते हैं उसको कि एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, बट यू हैव टू फॉलो अस वेरी प्रिसाइसली. ओके, तो वो एश्योरेंस ही बेसिकली क्या उसके आउटकम को बढ़ा देता है. तो मेरा एक सिंपल सी बात है कि रीअश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो फैमिली फिजिशियन में हमें देखने को मिलती है. तो हर स्पेशलिस्ट भी एक फैमिली फिजिशियन है इनफैक्ट आज के ज़माने में, और उसको पेशेंट के साथ टच बनाना बहुत ज़रूरी है. और अभी तो बेसिकली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं. जैसे कि हमने एक 100 पेशेंट का ग्रुप बनाया है, तो जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं तो उनकी क्वेरीज को हम उसमें सॉल्व करते हैं, और उसमें एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से सीखता है
कि देखिए क्या है कि उसने वजन कम कर लिया है, अपना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल है, ब्लड शुगर उसके कंट्रोल चल रहे हैं, तो अदर पेशेंट्स क्या है उससे पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या था, ऐसा क्या किया कि जिससे ये इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो एक पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट ये था मेरा कि हमारा प्राइवेट प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में डिस्पैरिटी बढ़ती चली जा रही है। 85% जो डॉक्टर हमारे हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में, और 15% जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आप सोच सकते हैं कि जो पेशेंट एक फीस को नहीं दे सकता, जो दवाइयां भी बहुत महंगी नहीं ले सकता, तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। ओके, तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जब तक कि हमारे डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, ओके, सीओपीडी, अस्थमा की जो मेन दवाइयां नहीं होंगी, ओके, तब तक हम क्वालिटी ट्रीटमेंट पब्लिक हेल्थ सेक्टर में नहीं कर सकते। तो इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा। जो भारत सरकार ने 1,30,000 ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले हैं, तो उसमें हमें फैसिलिटी देनी होगी, ओके, और ई प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा जहां हमें इम्पॉर्टेंट है, और पेशेंट्स को हमें सारा ट्रीटमेंट उसका मॉडर्न मेडिसिन के साथ देना होगा, जो अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज 63% जो मोर्टेलिटी इंडिया में भी है वो बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके। और कोविड के बाद ये और इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जिनको हार्ट पेशेंट्स को या डायबिटिक पेशेंट को कोविड हुआ था, उनका जो है कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया, तो मोर्टेलिटी बढ़ी है। तो इसीलिए लैंसेट की स्टडीज तो क्लियरली कहती है कि भारत में जो कोविड-19 के कारण, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण मोर्टेलिटी हुई है, दैट इज मोर देन 3 to 4 टाइम्स, ओके, एंड दे हैव अ सॉलिड प्रूफ ऑफ दैट कि उन्होंने सैंपल सर्वे उनके बहुत स्ट्रांग है, ओके, जो भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने गरिबान में देखना है पीछे जाके कि क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो basically you need to bring back the family doctor concept in one form or other. That's wonderful. I'll just go on to Dr. Mohit Gupta with just briefly to you, Dr. Mohit. Can you unmute yourself? Dr. Mohit Gupta, there is a question. One of our viewers, he says that I could understand most of what you said, but I didn't understand the last story that you said about the mud and something like that. So can you just briefly explain in English what exactly you try to convey? Basically, what I'm trying to say is the physical as well as the mental health, the life is a consequence of what is happening inside. Now, let me explain it to you very clearly. The last time I cut it short. I'll tell you very clearly that we need a health which is completely global, both physical as well as mental and emotional. All these things are a consequence of our thoughts, our behaviors, and our patterns. That is what I'm saying. The kind of thoughts, the kind of energy that we are continuously instilling into our mind, that yes, my will to be well, that is very important. Even today, if I want to transform my lifestyle, if I want to avoid all the cardiac diseases, if I want to have a good life, it is very important. This is originating from my own positive thoughts. That is what I'm saying. So if you want a both physical and a mental, emotional health balance, we have to transform our own belief system. I will give you a very practical thing for this. Every year, after the age of 30 to 35 years, each one of us should be having and taking care of the magical 8. What are these magical 8? These magical 8s are the hypertension, measuring your blood pressure. This is measuring your diabetic status. This is measuring your lipid goals. Now, lipid goals is not about LDL. Today, you must remember the most important lipid goal today is non-HDL cholesterol. These are things which we don't, as a physician, know. Then we should be taking care of our dietary patterns, our sleep patterns, our thinking patterns, all these things, smoking and tobacco. These things have to be categorized. We need to maintain a good lifestyle. Only then, as Dr. Kishore was asking me, that this is turning into an epidemic. The only way to defeat this is that we maintain our lifestyle. Remember, today's self-care is not a luxury, it's a priority. Both for the doctors also, even for the healers also. So if we take care of our own self in a proper way, only then we are able to perform and give our best to the outer world. This is number one. Second thing that I'm saying is, besides maintaining your physical data, you also maintain your emotional and mental data. हिंदी में हम इसको क्या कहते थे? पहले हम इसको कहते थे एक दिनचर्या बनाइए, लेकिन आज हम इसको कहते हैं दिनचर्या के साथ मनचर्या भी बनाइए.
Mancha rahe bhi bana. You start categorizing both for your mind as well as your body. So global health is both a balance of what you are thinking, how you are thinking, and the way you are manifesting and creating your world. This is what I often call it as a creating a conscious future. So a good and a healthy heart is a consequence of a healthy lifestyle, and a healthy lifestyle is a consequence of proper eating both physically and mentally, proper exercising both physically and mentally and emotionally, and proper rest both for physical and mental. Maintain your diet, maintain your charts. Very, very important. Please take it as a take home message. If you are crossing the age of 28, 30 years, have a good file every year. Get your profiles done every year, get your pressures done, keep your numbers correct, and keep your mind in a healthy state. Take it from me, you will be able to use and even switch off your negative genes by your positive thinking and maintain a good and a healthy lifestyle. This is a very powerful and a proper mantra. Give time to yourself. And last thing is, change is a process, it's not an event. It's not that today now Dr. Mohit says or Dr. Kishore says or Dr. Shankar says, wow, wonderful. Today I'm going to exercise for 1 hour, or 2 hours, or 5 hours. Next 5 days I'm not going to do this. No, this is not this. It is very important. Then change is the process. And if we are able to do this, this turns out magically well. This turns out magically well. And Dr. Kishore, I must tell you that this is why I'm saying this is because I have gone through this particular process. If you just allow me only 30 seconds, just have a look at this. Just have a look at this and you will see that how beautifully you can completely change your life. Just look at this. This will be really life-changing for most of our viewers. Just have a look at this and you will be really motivated to see that कैसे इसको हम अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं. देखिए इसको आप देखिए. Just have a look at this single slide. Nothing more than that. Just single slide. Look at this. This is my picture when in 2001, when I was in Johns Hopkins University, I was 96 kgs. I was having borderline thyroid, diabetes, hypertension, non-alcoholic steatohepatitis. People told me that you want to become a cardiologist, you should look like a cardiologist. It was for a young guy. It was a very, very difficult world. And this thing really hurt me. I started transforming my diet, exercise, and started meditating properly in 6 months without joining a gym. Without even consulting a dietitian, I got a whole new personality by changing my lifestyle. I lost 23 kgs. I've gone through this process every day in my life. And today, down 22 years, even till this particular day from 2001, my dear friends, look at this. When I've come back from America, I'm still maintaining this personality. So these are processes that each one of us has to do. These are not just talked about. These are all a process of our determination. That is what my take-home message for you guys. Thank you very much. I think wonderful. I couldn't recognize you from what you were in your younger days and what you are now. Absolutely different. I'll move on to Dr. Chandrakant Pandav. He has been waiting for quite some time, and I think senior most doctor, it's not fair for me to keep him waiting further. Dr. Pandav, namaskar, namaste. Namaste, namaskar, namaskar. Dr. Pandav, you're one of the senior most doctors. I don't know whether you had a chance to work with or interact with Dr. Roy. Dr. Roy, Dr. which Roy? Roy, on whom we have the National Founder Doctors Day. Dr. Roy, he had his last breath on 1st July 1962. Yes. I was 11 years old then. Okay. 11 साल के थे, 9 गया था. Okay, then remembering Dr. Roy, what should be the 3 qualities that a doctor should possess? The first and the most important, the significance of number 3, I want to tell you, is harmony, wisdom, and understanding. Harmony, wisdom, and understanding. ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे हील फाउंडेशन के कोर्स के 3 लोग हैं, 3 देवता है, शंकर, किशोर, and Swadeep. So the first and the most important thing is doctors must learn the art of listening. सुनते ही नहीं, खांसी है, सर दर्द है, अरे CT करो, BT करो, TT करो. 90% of your diagnosis is made on the basis of history, 90%. 5% is made on clinical examination. I have a panel of doctors here. Tell me how many do clinical examination? How many listen to their patient's complete history? 3% is done on routine laboratory
examination and 2% on CT, BT, TT, MT, MRI. So my first and most important message is learn to listen. Number 2, हमारे शो के अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बैनर्जी, कानून बनेगा करोड़पति. He said very important thing. 5 important disciplines should be taught to the doctors. Anthropology, psychology, sociology, politics and economics. These are called behavioral sciences. Unless and until you understand the perspective and the culture the patient comes from, you will not be able to communicate to him properly. That's number 2. Number 3, somewhere in the discussion, someone used a very important point. Reassurance. Prescription में reassurance लिखने वाले बहुत कम डॉक्टर हैं. तो मेरे ख्याल से मेरे 3 देवता है, 3 पॉइंट्स है. Learn the art of listening, learn the perspectives from the background which the patient is coming, and third is reassurance. 3 mantra hai. Kishore, I want to tell you, today I looked the meaning of what Kishore means. It is not youth. It means Lord Krishna. और पांडव कृष्ण बिना जीरो है. पांडव कृष्ण हो तो हीरो बन जाते हैं. So that's a new meaning to your word, Kishore. और शंकर तो हमारे भगवान शंकर है. अरे साहब. महादेव. Thank you very much. Yeah, and I will thank you very much for this wonderful advice to all the young doctors who are there out listening. And then I will move on to Dr. Sadiq Assam. Again, he is one of the young doctors. Dr. Sadiq, sorry for keeping you waiting. Yeah, you wanted to say something? Yes. Doctor? I just want to tell only one thing. We are a very important listener here today in conference. Sundi, yes. Dr. Azam, welcome. Sorry for keeping you waiting for this long, but I have an important question. Not at all. I have an important question for you. I think you are one of the youngest of the lot, so I'll ask you a question in modern times. Sure. With the onset of remote monitoring gadgets and telemedicine, do you feel the family doctor has come back in a new avatar? Because now there is a lot of contact with patients. You know the people very well because you're remotely monitoring them. They feed data in it. So has this modern concept of AI and telemedicine, remote monitoring changed the concept of a family doctor? Well, sir, yes. Actually, it was a bit baffling, why this whole concept of a family doctor went out of practice to begin with, because it is one of the most important links in the healthcare scenario. Like one of our previous speakers was mentioning, the role of a physician at a grassroots level cannot be overemphasized. We see patients coming to us with breathlessness and cough, and they've just walked in. They've not been through their physician. And many times, patients come and say, hum heart ke subah se sham tak we are just roaming in the hospital. Everyone is sending us to the other person. Now, these kind of things can be avoided if you go and consult your physician first, and then he has a complete screen of you, and then he can guide you as to which specialist you need to go and see. Instead of you going to the cardiologist saying, nothing is wrong, go to the pulmonologist saying nothing is wrong, go to the gastroenterologist. And many times we suggest, patients come with some kind of atypical pain, we do an ECG, we say, there's nothing wrong with you, please go consult a physician. Patient will still not go to a physician. They'll go to a pulmonologist or a gastroenterologist. Once again, they get directed to a physician and they'll still not go. So this concept of the family physician coming in is something that is really good news for public as well as for the medical fraternity. Because what happens is, at the end of the day, we don't end up, we are able to, give time to a lot of patients who really deserve the time, because a specialist is generally overburdened with so many patients that when you see somebody who comes in with atypical pain, you do an ECG, everything is fine. You're not able to give them that much time and talk to them and counsel them. As sir was just saying, we need to listen, we need to talk to them, we need to give them time. But then when you're having
a patient on the cath lab table, when you're having an MI in the ER, and then you're sitting in front of a patient who has absolutely nothing wrong from the cardiac side in front of him, every extra minute you give to him, trying to tell him there's nothing wrong with him, when it can easily be done by a primary physician at the same time. So these things will really help in streamlining practice. And a lot of these patient complaints, Carrie, we went to the doctor and the doctor didn't listen to us, will start coming down if we establish that hierarchy in our setups as well, which is sorely lacking. You see one of the major differences between the healthcare system in India and the healthcare system in the West is that there you cannot bypass the hierarchy. You have to go through your family physician, your GP, your internist, and then you land up with a specialist. Here, patients make a diagnosis that I have a heart attack, and then they land up in the cardiologist clinic, and then they want us to work them up for a heart attack. And you examine them, you make a clinical diagnosis, you get a basic ECG, and you tell them that, bhai, there is nothing wrong with you. They will not believe you, and God forbid he goes home and has a heart attack even a year down the road. You're facing a lawsuit saying, why didn't you get a 2D echo? Why didn't you get a treadmill done for this patient? Clinically, you don't feel that it's an MI. MIs can happen to the people in their best of health. I mean, you can drop it, I can drop it the next moment, even if all our investigations are normal. But unfortunately, the system has been, is progressed in such a manner that today, I mean, you were just speaking about doctors being portrayed as gods. Please don't treat us as gods. We are not. We are human. Human beings are not perfect. The Almighty is. So don't try to treat us like gods. Treat us like human beings. Accept the fact that, human beings have their limitations as well. So on the one side, unfortunately, doctors have been pushed to practice defensive medicine today. If people are having increased investigations being prescribed to them today, it is not because the doctor doesn't want to clinically examine you or the doctor doesn't know how to make a clinical diagnosis. Each of us has been through the grind. Each of us does take time to examine the patient and make a clinical diagnosis. But unfortunately, in the court of law, the clinical diagnosis amounts to not even 10 or 20% of your defense. You need hard evidence. You need data. If a patient has had a treadmill, has had an ECG, has had an echo, has had a basic coronary eval, when he has come to you with chest pain and you have found that he doesn't have any significant coronary disease and then he drops dead of a heart attack, you're safe. But if you clinically examine that patient, get an ECG and then say that, no, there's nothing wrong with you, and then the patient has a heart attack 5 years down the road or 2 years down the road or 1 year down the road, you're in a soup because you've not evaluated him in detail. So this is partly the reason why doctors are prescribing a lot of investigations. Doctors have gone into a defensive medicine mode, and it's bad news for the public. But unfortunately, somewhere everyone is to equally blame for this. And yes, the family physician coming in will make a sea change to this, provided the family physician is also given his due importance. You have devices, but then recently there was another judgment which was passed saying that, prescriptions cannot be made on a remote mode. Prescriptions cannot be made on internet mode, and you cannot prescribe without seeing the patient. So this is a mixed signal that is being sent out to the medical fraternity again. I mean, during the pandemic, you were hailing these kind of remote consultations. You were promoting these kind of remote consultations. Then today, I think just the other day, someone was sharing the excerpt of another judgment which was passed saying that the doctor has prescribed medications based on reports alone, and hence he is liable and he has to pay compensation or he has to be punished for some mishap that happened. Now, if things like these, this is a mixed signal. Again, see, on the one side, you have remote monitoring facility. On the one side, you have internet. You have the facility to share your reports, to get an online consult done. On the other hand, you say that, if you're doing this, you're going to be in trouble. So the medical fraternity is really confused. You need to have good, proper guidelines out there to make family physicians a part of the medical hierarchy. Otherwise, this is just going to be another side of the same coin, and it's not going to serve any purpose. So yes, it is a good thing, but it needs to be streamlined. Thank you very much, Dr. Azam. I think it is wonderful. We have run short of time. I think the basic thing is that have a mutual trust between the doctor and the patient. I think that will help a lot in ameliorating the situation.
Thank you Yes, very much. yes, It was a very- wonderful session. And though we are 2 days late, happy Doctors Day to all the senior doctor faculty members over here who made this show really wonderful. Thank you very much. And Thank you, sir. And I hand over the platform to Kishore Malviya. थैंक यू सर। तो आज के शो में शामिल सभी डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हुए हम शो समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। हम अपने दर्शकों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से हमारी बातें सुनी। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे नए विषय और ढेर सारे सवालों के साथ सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, टेक केयर।